हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली अच्छे से आपने टेस्ट दिया होगा, एनालाइज किया होगा कि आपको अब तक क्या चीज़ समझ में आई। माय डियर फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट एग्जामिनेशन में से डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन जाते हैं। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय पेप्टाइड। So when two amino acid, a carboxyl group of one amino acid and a amino group of another acid, they interact and there is a dehydration, that is an elimination of water molecule. The bond which is formed is a peptide bond. For example, here this is the serine. So if you look here, that there are two amino acid. This is the amino acid serine having a carboxyl group having C double bond OH group. And this is another amino acid valine which is having an alpha amino group. There is an elimination of water OH from the carboxyl side and H from the amino side, and there is a formation of bond, and that bond is peptide bond. So basically peptide bond is found between an alpha carboxylic and alpha amino group. So peptide bond is formed between alpha carboxylic group is found between, you can say, alpha carboxylic group of amino acid 1 and alpha amino group of amino acid 2nd. And during this there is an elimination of water. The same thing could be diagrammatically represented over here, that this is the first amino acid having a C double bond OH group, and this is the second amino acid having its alpha amino group. From COH group, OH is liberated, and from amino group H is liberated. In general, a complete one water molecule is eliminated. So there is an elimination of a water molecule, and this bond which is being formed between alpha carboxylic and alpha amino group is referred to as peptide bond. Peptide bond, technically it is a kind of amide bond. So it is a kind of amide bond. So you can draw this diagram. There is a formation of amide bond between a alpha carboxylic and alpha amino end. Now coming to the important properties of a peptide bond. Most important property of peptide bond is, most often the peptide bond is in trans orientation. So most of amino acids, they form a trans peptide bond, and from trans peptide bond what we mean is, let's say this is a peptide bond which is in between a alpha functional carboxylic group and an amino group. This is a peptide bond. What you will find is that the R chain of an amino acid 1 and R chain of an amino acid 2, they often lie in a opposite side. Such an orientation is referred to as trans orientation. Or even we can say that the oxygen, carbonyl oxygen and amide hydrogen, they lie in, or they are present on the
opposite side, ये दोनों opposite side पर present. Okay. Very rarely the peptide bond as shown over here between C double bond O, where O and H they are on same side, or two R chain they are on a same side. It is very rare. But if it happens, then the peptide bond would be referred to as a cis peptide bond. So most of time the peptide bond is a trans peptide bond. Very rarely the peptide bond would be the trans peptide bond. Then moving further, so we were talking about that most often the peptide bond is in trans orientation. Very rarely the peptide bond could be in a cis orientation. Only as we have discussed that if amino acid is followed by proline, then on this side you can expect a cis kind of peptide bond. Otherwise, whether it is on this side of an proline, this would be a trans. So most often the peptide bond what you find is a trans type of peptide bond. The peptide bond, it is represented by the rotation around the peptide bond, which is not allowed, but this is measured by omega. The value of omega is fixed because no rotation is allowed around peptide bond. Peptide bond पर कोई rotation allowed नहीं है, इसलिए ओमेगा की वैल्यू फिक्स होगी. ट्रांस ओरिएंटेशन है तो ओमेगा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और सिस ओरिएंटेशन है तो ओमेगा की वैल्यू 0 डिग्री होगी. Most of amino acid they have a trans peptide bond. Well, if an amino acid is followed by proline, then on amino terminus of proline you can find a cis kind of peptide bond. Proline can form cis as well as trans. Then peptide bond, my dear friends, has a partial double bond character. That is, this oxygen pulls an electron from carbon to this side. Carbon pulls the electron from here to here, and these electrons they keep on resonating. And since the electron they keep on resonating, the peptide bond, the CN bond, is not a pure single bond. 60% of times the electron is between carbon and oxygen, and 40% of times the electrons resonate between carbon and nitrogen. And that's why we say that peptide bond, it is neither pure single bond nor it is pure double bond. It is having the partial double bond character. The bond length is 0.145 nanometer, and this bond length is, so peptide bond is smaller than single bond, single covalent bond, but lesser, or sorry, but longer than
double bond. And what this suggests? This suggests that peptide bond, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है द बॉन्ड लेंथ इज अराउंड 0.145 नैनोमीटर. द बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड अराउंड 0.16 नैनम होगा, तो डबल बॉन्ड होता कार्बन नाइट्रोजन के बीच में तो 0.13 नैनोमीटर. इट इज इन बिटवीन which suggests that it is having a partial double bond character. Then moving further is another important property is due to this partial double bond character, peptide bond is planar. As already mentioned, no rotation is allowed around the peptide bond. तो जैसे पहले ही मेंशन हम कर चुके हैं, C डबल बॉन्ड O और NH यहां पर कोई रोटेशन अलाउड नहीं है ड्यू टू अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. Rest of structure we can draw like this. This is an alpha carbon having an R chain. This is an, let's say, NH2 group. This is H. This is another amino acid. Let's say this is another alpha carbon. This is the R chain of another amino acid, and this is the COOH. You can put a hydrogen on this side. Peptide bond is having a partial double bond character, due to which at this bond no rotation is allowed. No rotation is allowed at position omega. ओमेगा के ऊपर किसी तरीके का रोटेशन अलाउड नहीं. यानी ये सारे एटम्स एक रिजिड है, प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यहां पर किसी तरीके की रोटेशन अलाउड नहीं है. सो द पेप्टाइड बॉन्ड, so no rotation is allowed. We can write down, no rotation is allowed across, no rotation is allowed at peptide bond. And why so? ऐसा क्यों? The reason is due to partial double bond character. Due to partial double bond character. अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता तो रोटेशन आसानी से किया जा सकता है, पर दो एटम्स के बीच में अगर दो स्टिक जोड़ दी जाए तो अब रोटेशन अलाउड नहीं. यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है. इट मींस ओमेगा इज आइदर फिक्स्ड, दैट इज आइदर 180 डिग्री if it is in trans orientation, that is for most of amino acid, or the value of omega is 0 degree if this peptide bond is in cis orientation. Okay, so peptide bond is planar structure, no rotation is allowed. Then moving further, the peptide bond is polar. Peptide bond polar है, or we can say the complete polypeptide backbone, it has a relative polarity due to the peptide bond. The reason for the polarity of peptide bond is that, as already mentioned, the oxygen pulls the electron from a carbon toward itself. ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है और जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा उसे नेगेटिव एंड कहा जा सकता है. कार्बन इलेक्ट्रॉन पुल करता है नाइट्रोजन से, कार्बन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव. तो व्हाट वी से दैट ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस तरीके का है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है. यहां पर एक नेगेटिव एंड भी दिखाई देगा और पेप्टाइड बॉन्ड पर एक आपको पॉजिटिव एंड भी दिखाई देगा. So peptide bond is planar, it is having partial double bond character, peptide bond is relatively polar. Polar है but uncharged है,
प्योर चार्ज नहीं है, योर विल फाइंड अ पार्शियल चार्ज, सो इट इज अ पोलर अनचार्ज्ड, और वी कैन से नॉन आयनाइजेबल। पोलर तो है पर इट इज अनचार्ज, इट इज नॉन आयनाइजेबल। Peptide bond, it shows an maximum absorption. Peptide bond shows a maximum absorption in far UV range, somewhere in between 190 to 220 nm. जनरली जब प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो जो वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं दैट इज नियर यूवी टू 80 nm, because that is the wavelength maximally absorbed by tryptophan. But hypothetically, if some protein is missing a tryptophan, then its quantitative estimation could be done on basis of the peptide bond. But for this, you have to work in a far UV range. The maxima around 190 nm and 220 nm, basically this is due to the peptide bond. So it is not in near UV range, it is in far UV range. Coming to the point, isoelectric point of polypeptide. We have calculated isoelectric point of amino acids. हमने ये कहा था कि एसिडिक अमीनो एसिड है तो 2 एसिडिक पी के वैल्यू को ऐड करो, बेसिक अमीनो एसिड है तो 2 बेसिक पी के वैल्यू को ऐड करो। पर जब पॉलीपेप्टाइड्स की बारी आती है जहां पर खूब सारे अमीनो एसिड्स हैं, उस कंडीशन में व्हाट वी डू इज the isoelectric point of a polypeptide, it is average of pK values of all ionizable groups. जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं उन सब का एवरेज, यहां पर हमें किसी को लीव नहीं करना है। यू हैव टू टेक ऑल पीके वैल्यूज इनटू कंसिडरेशन, जितनी भी पीके वैल्यूज है उन सबको कंसिडरेशन में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर हैविंग सम हाइपोथेटिकल polypeptide having a sequence alanine, then there is a valine, then there is, let's say, lysine, then there is a, let's say, glutamine, then there is a aspartic acid, then let's say there is a valine, then there is a, let's say, isoleucine, then there is, let's say, histidine, then again there may be an aspartic acid, then there is a valine, arginine, alanine. So this is some polypeptide. So अगर इसका हमें आइसोलेट पॉइंट कैलकुलेट करना है तो वी मस्ट नो द पीके वैल्यू ऑफ ऑल आयनाइजेबल ग्रुप, जितने भी आयनाइजेबल ग्रुप हैं उन सब की पीके वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो कितने आयनाइजेबल ग्रुप हैं अगर हम मेंशन करें तो हमेशा किसी भी पेप्टाइड में एक अमीनो ग्रुप जरूर होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होगा, और फिर ऐसे अमीनो एसिड्स को सर्च करना है जिनकी आर चेन में आयनाइजेबल ग्रुप हो। ऐसी बहुत कम अमीनो एसिड्स हैं, एसिडिक 2 हैं, दैट इज एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, 3 बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और कुछ केसेस में आप सिस्टीन और टायरोसिन को इंक्लूड कर सकते हैं। यहां पर के इज लाइसिन जिसकी आर चेन आयनाइजेबल है, एस्पार्टिक एसिड की आर चेन आयनाइजेबल है, हिस्टिडीन की आर चेन आयनाइजेबल है, एस्पार्टिक एसिड की आर चेन आयनाइजेबल है, और आर्जिनिन की आर चेन आयनाइजेबल। सो कुल मिलाकर यहां पर आपको एवरेज कितने का निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 जो वैल्यूज हैं उनका हमें एवरेज निकालना है, और वह पी के वैल्यूज दी हुई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया कि पीके 1 वैल्यू which is of an alpha carboxylic group, it is given to you, and that is, let's say, 2. pK2 value of an R chain of, let's say, aspartic acid is given to you is 4,
pK3 is R chain of histidine, suppose it is given to you is 6. pK4 value that is of R chain of, let's say, lysine is given to you, and prior to this even अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अल्फा अमीनो ग्रुप की वैल्यू आपको हो सकता है दे रखी हो, दैट इज 9. फिर pK5 आपको R चेन लाइसिन की दे रखी हो, लेट्स से 11, एंड pK6 लेट्स से R चेन ऑफ आर्जिनिन की दे रखी हो, दैट इज सपोज 13. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. The isoelectric point which you will calculate would be somewhat like this. उसको कैसे calculate करेंगे? You will say that isoelectric point would be the average of all value. सबसे पहले इस वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, यहाँ की वैल्यू को लो, यहाँ की वैल्यू यानी अल्फा अमीनो ग्रुप की वैल्यू कितनी है 9, प्लस आर चेन ऑफ लाइसिन, ये सेकंड वैल्यू को यहाँ से प्लेस करो, तो लाइसिन कहाँ पर है, सॉरी हाँ लाइसिन कहाँ पर है, यहाँ पर, दैट इज 11. थर्ड वैल्यू एस्पार्टिक एसिड की लो, एस्पार्टिक एसिड की वैल्यू कितनी है 4. फोर्थ वैल्यू हिस्टिडीन की लो, हिस्टिडीन की कितनी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6. फिफ्थ वैल्यू वापस एस्पार्टिक एसिड की है, एस्पार्टिक एसिड 2 बार रिपीट हो रहा है, उसकी वैल्यू को रखो 4. तो सीधा यहां से एवरेज ना निकालें, क्योंकि हो सकता है कोई अमीनो एसिड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो. आर्जिनिन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 13, और सेवंथ वैल्यू अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज 2. टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो यू विल गेट 11 प्लस 9 20 प्लस 10 30 30 प्लस 30 प्लस लेट्स से 17 प्लस 2 19 divided by 7, that will come out to be approximately 49 by 7, and answer would be 7. So isoelectric point of this particular peptide will come out to be 7. That is, at pH 7 this peptide will be a net charge would be 0. At this pH, the solubility of this peptide would be minimum, that is referred to as isoelectric precipitation. And rest of the point is that we have already discussed that if pH is lesser than the isoelectric point, that is here isoelectric point is 7, peptide will bear, peptide के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, peptide will bear a positive charge. And if pH higher pH है तो deprotonation होगा, और deprotonation होने पर obviously deprotonation होने पर पॉजिटिव चार्ज तो आने से रहा, peptide will bear a negative charge. Okay, so if pH is equivalent to isoelectric point, the net charge would be 0. For example, in this case pH 7, if it is there, charge would be 0. If it is lower than 7, charge would be positive. If it is greater than 7, the charge would be negative. And what could be the maximum positive or negative charge, that also you can mention. कि अमीनो ग्रुप है उधर इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइसिन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एस्पार्टिक एसिड की आर चेन पे माइनस चार्ज, हिस्टिडीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एस्पार्टिक एसिड के ऊपर माइनस चार्ज, आर्जिनिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इधर की तरफ माइनस चार्ज. तो कितने माइनस ग्रुप है, तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, एंड ऑब्वियसली दैट वुड बी एट एक्सट्रीम पीएच, लेट्स से एट पीएच 2, इतना लोअर पीएच करने पर कितना आ सकता है, तो 1 2 3 4 पॉजिटिव 4 चार्ज आ सकता है. और मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज कितना आ सकता है, कोई ये पूछे आपसे तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज लेट्स से
this would be where pH which is higher than all the isoelectric point, let's say at pH 14, जहां पर सब डी प्रोटोनेशन हो। तो मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, तो नेगेटिव वाले ग्रुप्स काउंट करेंगे हम। नेगेटिव ग्रुप कितने हैं, 1 2 1 2 एंड 3। सो इस पॉलीपेप्टाइड के ऊपर जो गिवन पी के वैल्यूज है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है दैट इज +4 एंड मैक्सिमम जो नेगेटिव चार्ज आ सकता है दैट इज -3। These are the possibilities. Another important thing is that the calculated isoelectric point and actual isoelectric point may be slightly different. जो हमने न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया, calculated isoelectric point and experimentally observed PI may be slightly different. रीजन ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने डियर फ्रेंड्स वैल्यूज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की कंसिडरेशन में ली है, द वैल्यूज जो भी हमने पी के वैल्यूज हमने यहां पर कंसिडरेशन में ली है, दीज पी के वैल्यूज दे आर ऑफ फ्री अमीनो एसिड्स इन एन एक्वस एनवायरमेंट। उस दौरान एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है उन वैल्यूज को लिया है। पर जब पेप्टाइड या प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन फोल्ड होता है, तो उस दौरान जो डिफरेंट आर चेन या इवन अल्फा अमीनो ग्रुप एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, they are in different micro environment. So same amino acid R chain may have different pK values, slightly different pK values depending upon the micro environment in which it is being kept. For example, इसमें हमने कहा कि 2 एस्पार्टिक एसिड है जिन दोनों की पीके वैल्यू हमने 4 कंसिडर कर ली, पर अगर एस्पार्टिक एसिड पेप्टाइड के नॉन पोलर कोर में है तो वह वीक एसिड की तरह, थोड़ा और वीक एसिड की तरह काम करेगा, मतलब उसकी पीके वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये अगर एस्पार्टिक एसिड की आर चेन सरफेस पर होती तो सरफेस सराउंडिंग में वाटर अवेलेबल है, जिसकी वजह से HN आसानी से डिसोशिएट होता, पीके वैल्यू कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती या स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता। इसके अलावा एस्पार्टिक एसिड के पास अगर एस्पार्टिक एसिड है तो एसिड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, पीके वैल्यू बढ़ जाएगी। एसिडिक आर चेन के साथ बेसिक आर चेन आ गई, पास में आप बेसिक आर चेन आ गई, तो अब एसिड आसानी से डिसोशिएट हो पाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना शुरू कर लेगा, पीके वैल्यू वापस कम हो जाएगी। ऐसे ही जो अल्फा अमीनो ग्रुप है और अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगर वो पास पास में है तो अमीनो ग्रुप का जो एसिडिक ग्रुप है उसका डी प्रोटोनेशन हो सकता है और अमीनो ग्रुप का प्रोटोनेशन हो सकता है। जो एसिड ग्रुप है वह स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह कंपैरेटिवली काम करेगा, वीक जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे पेप्टाइड लेंथ बढ़ाते जाओ, इस तरह से लेंथ को बढ़ाते जाओ, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अमीनो ग्रुप की स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम हो जाएगी और एसिड ग्रुप की भी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी जो अमीनो ग्रुप है उसकी पीके वैल्यू है वह कम होती जाएगी और जो एसिड ग्रुप है उसकी पीके वैल्यू बढ़ती जाएगी। और उसमें थोड़ा सा भी चेंज आया, पीके वैल्यूज में अगर कुछ भी चेंज आता है, इफ देयर इज सम चेंज इन अ पीके वैल्यूज में किसी तरीके का अगर चेंज आता है तो उस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली उसके ऊपर डिपेंडेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर भी चेंज आएगा। सो ओनली पॉइंट which is to be kept in mind is that the pK values of same amino acid may be slightly different if it is being kept in a different environment. Got this? And different R chains, they lie in different micro environment. Hypothetically, if same peptide, let's say it is composed of 10 aspartic acid,
The R chain of 10 aspartic acid all may have a slight different pK values depending upon the microenvironment in which they have been kept. Then this is about the isoelectric point of polypeptides. Coming to the average molecular weight of a peptide or a protein. We have seen that the molecular weight of an amino acid का जो molecular weight है, that ranges from 75 to even almost 204. It ranges from glycine to tryptophan. The average molecular weight on basis of the all amino acid average comes out to be 138, almost around 138. But on basis of the occurrence in protein, it is considered to be 128. But so average comes out to be like this, but on basis of occurrence in a occurrence of amino acid in a protein, it is considered to be 128. But when amino acid is part of protein, water molecule is eliminated. Thus, average molecular weight of amino acid is 110 Dalton, that is 128 minus 18, that will come out to be 110 Dalton. So होना 138 चाहिए, पर स्मॉल अमीनो एसिड्स की अक्रेंस ज्यादा होती है, इसलिए 128 एवरेज आता है जो करेक्टेड एवरेज है। और जब अमीनो एसिड प्रोटीन का हिस्सा बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर किया जाता है दैट इज 110। सो दिस इज विच इज यूटिलाइज्ड फॉर कैलकुलेशन पर्पस। यानी लेट्स से अगर आपको ये कहा गया कि देयर इज प्रोटीन ऑफ 200 amino acids, what will be its molecular weight? इसका molecular weight, approximate molecular weight क्या होगा? सीक्वेंस नहीं दे रखी है, अगर सीक्वेंस दे रखी हो तो हम एब्सोल्यूट molecular weight कंसीडर कर सकते हैं। So what would be the molecular weight of this particular protein? कैलकुलेट कर बताएं। So how we will approach to this problem? There are 200 amino acids. Average molecular weight of each amino acid is 110 Dalton. So what you will say is 22,000 Dalton, that is 22 kilo डाल्ट। इस तरीके से हम किसी भी प्रोटीन का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से अगर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि इफ प्रोटीन इज ऑफ 55 किलो डाल्टन, व्हाट विल बी approximate number of amino acids? Approximate number of amino acids कितने होंगे? कैलकुलेट करके बताएं। अमीनो एसिड्स पता थे
तो आपने प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लिया। अब प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पता है तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पता कर बताएं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? इट्स वेरी सिंपल। 55 किलो डाल्टन मीन्स 55,000 डाल्टन and molecular weight of one amino acid is 110 डाल्टन। सो 0 से 0 कट गया और 11 से 5 जा 55 होता है। सो यू हैव लेफ्ट बिहाइंड बिटवीन 500, दैट इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज 500। सो एवरेज molecular weight which is considered for the protein is 110 Dalton. When you are considering the 110, अब आपको वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं करना। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद ही हमने 110 कंसिडरेशन में लिया। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। मूविंग टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे सिंपलेस्ट जो पेप्टाइड हो सकती है दैट इज अ डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड्स अगर आपस में आकर जुड़ जाए, अमीनो एसिड 1 एंड अमीनो एसिड 2 आकर जुड़ जाए, देन इट वुड बी रेफर्ड टू एज डाइपेप्टाइड। In dipeptide, di represents the number of amino acid, not the number of peptide bond. So dipeptide means two amino acid linked by one peptide. The best example of dipeptide is a artificial sweetener. This is an artificial sweetener referred to as aspartame, also referred to as sugar-free sugar. It is composed of two amino acids. One is an aspartic acid and the second amino acid which is linked with this is a phenylalanine, or more accurately an ester of a phenylalanine. That is, you can see that the carboxylic group, there would be various other evidences. Carboxylic group of an amino acid can form an amide bond, as well as carboxylic group could also form a ester bond. So this is an ester bond. Okay, there are multiple places where you will find there would be formation of a amide or ester bond. This is the artificial sweetener referred to as aspartame. Then another important short peptide is a tripeptide. Glutathione playing an important antioxidant functions. एंटीऑक्सीडेंट मशीनरी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। Basically, it is a tripeptide composed of 3 amino acids, could be referred to as ECG. That is, E stands for glutamic acid,
C stands for cysteine, and G stands for glycine. So this is one of the example of tripeptide. Even thyroid releasing hormone is also a tripeptide. Similarly, tetrapeptide, pentapeptide, octapeptide, nanopeptide, decapeptide, they are also quite known. So longer peptide is general name. If these are shorter peptide, often you use the word oligopeptide. So peptide is a general name. You can use the term oligopeptide, often in between 2 to 20, or you can utilize a polypeptides if the number of amino acids or amino acid residues are over 20. So peptides are the amino acids which are linked by a amide bond or peptide bond. Proteins, they are composed of one or even more than one polypeptide chain. इस टेबल से कुछ सारे नाम याद नहीं रखने हैं. You don't have to remember all the names, but highlighting that some protein they are composed of single polypeptide chain, and there are various proteins which are composed of more than one polypeptide chain. Chitin is one of the longest protein known in human. The largest or longest protein is a muscle protein referred to as chitin. So molecular weight is almost around 3 megadalton, or almost you can say 2993 kilodalton, almost having 27,000 amino acids and composed of single chain. Glutamine synthetase of E. coli, an enzyme, also has almost around 5,628 residues, and it is composed of 12 polypeptide chain. So protein may be composed of single polypeptide chain or even more than that. Some another marker proteins include a serum albumin, whose mass is 66 kilodalton. It is composed of single subunit. Often it is utilized as a marker. Hemoglobin is of 64.5 kilodalton. It is composed of 2 alpha subunit and 2 beta subunit. Another marker protein is myoglobin, which is of 153 amino acids, almost around 16.7 kilodalton, 1/4 of myoglobin. Myoglobin is around 64, while hemoglobin is around 64, and 1/4 of this is myoglobin, that is 16 kilodalton. 16.7 kilodalton is composed of 1 subunit. Then another example which you can consider over here is a lysozyme, which is of 14.3 kilodalton, composed of single subunit. Ribonuclease A, around 124 amino acid, composed of 37 kilodalton. Cytochrome C, which is around having 104 amino acids. So most often you find that enzymes, they have 100 or more amino acids. If we will study an enzyme, then it will be clear to you. Because it has to fold into some 3D conformation, there must be some amino acids which should be at periphery, and there must be some amino acids which should be at the core. So proteins, they may have large number of polypeptide chains, or a protein may have a single polypeptide chain. Now
it is not necessary that proteins will have only amino acids. There may be some derived proteins. There may be some conjugated proteins. They may have some other associated prosthetic group beside amino acid. For example, the class of protein is lipoprotein, as name suggests, lipids they are attached to the proteins. We will study various examples of lipoprotein. One of them is beta 1 lipoprotein. We will also study very low density lipoprotein, and some we have already introduced when we were talking about the cholesterol: low density lipoprotein, high density lipoprotein, intermediate density lipoprotein, very low density lipoprotein, and so on. Similarly, second category could be a glycoprotein, that is a sugar or carbohydrate is a prosthetic group. An example of carbohydrate as a prosthetic group is most of the secretory proteins, the proteins which are secreted by the cell, whether it is a insulin or whether it is a glucagon, whether it is a immunoglobulin, whether it is cytokine. These all proteins, these are the glycoproteins, and we will study in cell biology. The glycosylation could be N-linked or glycosylation could be O-linked. Clear? Then another category of protein could be a phosphoprotein having a phosphate group. Various enzymes like glycogen synthase, glycogen phosphorylase, there is an addition of phosphate group on them. हम पढ़ेंगे रेगुलेशन में कई सारे प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है एट वन और मोर प्लेसेस. Even casein, a milk protein, has an associated phosphate group. So such proteins which are having an covalently linked phosphate are referred to as phosphoprotein. Then hemoproteins, as name suggests, have a associated heme as a prosthetic group, covalently bound heme. Heme is porphyrin 9 plus iron. Various example of heme protein is there. One of them is hemoglobin, and almost all cytochromes, beside hemoglobin, almost all cytochromes, hemoglobins, cytochromes, these are hemoprotein. Then flavoprotein, which is having either FMN or FAD associated with them, they are referred to as flavoproteins. Example of flavoprotein could be complex 1 of electron transport chain, that is NADH dehydrogenase complex. In this, NADH dehydrogenase has an associated FMN. Complex 2 electron transport chain, that is succinate dehydrogenase complex, और उसमें succinate dehydrogenase के साथ FAD associated होता है. Then there may be various metalloproteins having some metal ion associated with them. For example, iron is associated with a ferritin, aconitase, and various other examples are there. Zinc is associated with a alcohol dehydrogenase. Calcium is associated with the calmodulin and various other proteins which start with cal. For example, calnexin or calreticulin, or we can use take another name, that is cadherin. They have associated calcium. Molybdenum, a metal, is associated with a dinitrogenase, also referred to as simply nitrogenase, which is present in nitrogen fixing bacteria. Copper is seen in various cyanoprotein, and one such example is plastocyanin. And beside plastocyanin, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप देखेंगे साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3 beside having, especially cytochrome A3 beside having an iron, also having a copper. You will use the term copper A and copper B. Then so प्रोटीन्स में अमीनो एसिड के सिवाय कुछ और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी एसिड हो सकता है. That could be lipoprotein, glycoprotein, phosphoprotein, flavoprotein, metalloprotein, etc. Now
coming to the different hierarchical level of protein folding. That is how protein it is folded. The different levels of protein folding include primary structure, which mainly include peptide bonds. Then primary structure further fold into variety of secondary structures, alpha helix, beta sheet, reverse turn, etc. Various secondary structures, they fold over itself to form a tertiary structure. And for most of the proteins which are composed of single polypeptide chain, the tertiary structure is final structure. But it might be a case that polypeptides, which each polypeptide is in tertiary structure, such polypeptide chains, they may interact with each other if they have some kind of molecular affinity. Then the final structure would be referred to as quaternary structures. So these are the different levels of protein folding: primary, secondary, tertiary, and quaternary. To understand the secondary structures of a protein, first we have to focus on the Ramachandran plot. So coming to the Ramachandran plot. So first level, create to a secondary structure, having a little bit idea about the primary structure of a protein. Primary structure of protein means basically the primary structure of protein, it is mainly stabilized by, covalent bond. Basically from covalent bond we mean that we are talking about a peptide bond. Peptide bond, chemically it is the amide bond. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 के साथ अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5 एंड सो ऑन, अमीनो एसिड n आपस में एसोसिएट होगा, ये कोई एक अमीनो टर्मिनस भी होगा. दिस इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड ईच बॉन्ड इज रेफर्ड टू एज पेप्टाइड बॉन्ड. थोड़ा और अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें डिटेल, तो पेप्टाइड बॉन्ड कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है. दिस इज NH2, this is amino acid 1, then this could be C double bond O and H, this is peptide bond, and this is amino acid 2, this is its carboxyl and NH, then this may be amino acid 3, then this may be another carboxyl group NH group, amino acid 4, जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अंदर की तरफ हम ड्रॉ कर सकते हैं NH, amino acid 5, जिसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड सो ऑन. And as we have said that this peptide bond, it is the plain structure. ये peptide bond है जो दो अमीनो एसिड को आपस में लिंक करता है. These are the peptide bonds. Okay, then
as we have already mentioned, this omega is fixed. The value of omega is fixed. No rotation is allowed. Either it is 0 degree or it is 180 degree. If this peptide bond is in cis orientation, omega value could be 0. Otherwise it is 180 degree. अब यहां पर रोटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर ये दो बॉन्ड हुए जहां पर रोटेशन, अगर किसी तरीके का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस मेन चेन में देयर मस्ट बी सम बॉन्ड्स जहां पर रोटेशन अलाउड हो. तो ऐसे दो बॉन्ड्स, एक तो N और अमीनो एसिड 2 इस एंड पर अवेलेबल, इसे फाई कहा जाएगा, और इस अमीनो एसिड 2 का ये अल्फा कार्बन कह दें हम, सेंटर वाला अल्फा कार्बन और C के बीच में देयर इज अनदर बॉन्ड जिसको साई से रिप्रेजेंट किया जाएगा. यानी मेन चेन में पेप्टाइड बॉन्ड तो नहीं, तो फिर N और C अल्फा के बीच वाला बॉन्ड और C अल्फा और C के बीच में जो बॉन्ड है उस पर रोटेशन होगा, तभी तो, नहीं तो अदरवाइज तो ये पूरा शीट लाइक होगा. अगर इसको अगर बेंड करके कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है या ऐसे किसी प्लेटेड शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, तो देयर मस्ट बी सम बॉन्ड जहां पर रोटेशन पॉसिबल, क्योंकि इसी से कहीं ना कहीं पर तो रोटेशन होकर इस तरीके का कोई ना कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. इस तरीके का स्ट्रक्चर या इस तरीके का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करना, देयर मस्ट बी सम बॉन्ड्स वेयर रोटेशन मस्ट बी अलाउड, because same primary structure it will further fold into a secondary structure. Secondary structure protein, basically it is a local conformation due to its backbone. मेन चेन जिसे हम बैकबोन कह रहे हैं, उसके अंदर जो लोकल कन्फॉर्मेशंस होते हैं, उसकी वजह से मेन चेन के अंदर जो रोटेशन जहां कहीं पर भी हो रहे हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर एडॉप्ट होगा उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाए. सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार हमें वापस रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में देखना पड़ेगा. सो coming to Ramachandran plot. Ramachandran plot, it shows that what would be the possible phi and psi angles for polypeptide, and on basis of this you can make some kind of prediction about secondary structures. What I mean to say is, let's say this is some kind of polypeptide chain NH2, this is alpha carbon, let's say C alpha carbon, this is the carboxylic end, this is, let's say, again an nitrogen, this is again an alpha carbon of second amino acid, this is the carboxylic group NH, this is again alpha carbon, this is C double bond O, this is NH, C alpha carbon, C double bond O, N H, and so on. Let's say we are focusing on some segment. This is N, and let's say this is H. So we are focusing on some segment of protein. And different amino acids, they are variable in their R chain. Okay, so let's say there is an R chain on this side. चलो ट्रांस ओरिएंटेशन भी हम मेंटेन करके रखते हैं. इसकी आर चेन इधर की तरफ रख लेते हैं, इसका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, थोड़ी सी ग्रुप की पोजीशन चेंज, ट्रांस ओरिएंटेशन में सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं. इसका ये आर चेन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच इधर की तरफ, आर इधर की तरफ आ गया. So now we are keeping a trans orientation everywhere. That is the R chain of adjacent amino acid, it is being kept on opposite side. And as we have already mentioned that this bond between a C and N, this bond is referred to as peptide bond. इस bond को peptide bond कहा जाएगा. C और N के बीच में जहां कहीं पर भी bond है, this is a peptide bond. यहां पर भी जो बॉन्ड होगा C और N के बीच में.
और पेप्टाइड बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से किसी तरीके का कोई रोटेशन अलाउड नहीं है। सो यहां पर तो कोई रोटेशन ही अलाउड नहीं है ड्यू टू अ पार्शियल double bond character. No rotation is allowed at this place, nor a rotation is allowed at this place. इन जगहों पर किसी तरीके का रोटेशन अलाउड नहीं। ओमेगा वैल्यू इज फिक्स। इस डायग्राम के हिसाब से सभी जगह पर ओमेगा की वैल्यू को हमने 180 डिग्री रखा है, ट्रांस ओरिएंटेशन में रखा है। यू कैन से दैट ओमेगा वैल्यू इज फिक्स। यहां पर जो भी रोटेशन है दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज फिक्स, इट इज बीइंग केप्ट इन अ ट्रांस ओरिएंटेशन, ऑपोजिट ओरिएंटेशन में हमने रखा है इसको, और ऑपोजिट ओरिएंटेशन का मींस वी हैव केप्ट इट इन 180 डिग्री ओरिएंटेशन। And you can see that R chain of adjacent amino acid, this is on opposite side. This is the R chain of this amino acid, this is R chain of second amino acid, this is R chain of third amino acid, this is R chain of fourth amino acid, and so on. अगर अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन को किसी तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है तो देयर मस्ट बी सम बॉन्ड, कोई ना कोई तो बॉन्ड होना चाहिए जहां पर रोटेशन अलाउड हो, क्योंकि अगर रोटेशन किसी बॉन्ड पर अलाउड ही नहीं है तो फिर इस बॉन्ड यहां पर भी कोई अलाउड नहीं है तो फिर कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाएगा। अब देख सकते हैं मेन चेन में 3 बॉन्ड आते हैं, वन इज बिटवीन N and C, one is bond between N and C alpha, which we are representing, and even Ramachandran has represented by symbol phi. Another bond is between C alpha and C, or we can also name it as C dash. This is represented by symbol psi. This is pure single bond. This is also a pure single bond. And another bond which comes out to be is between C and N. This is phi, this is psi, and then comes, this is referred to as omega. This is a partial double bond. Pure single bond means rotation allowed. Here also rotation allowed. Here no rotation allowed. रोटेशन अलाउड नहीं। वापस फाई साई ओमेगा, फाई साई ओमेगा, फाई साई ओमेगा. So out of the 3 bonds, the 2 bonds are pure single bond and thus rotation is allowed on these bonds. पर इस पर कितना, फाई पर कितना रोटेशन होगा, साई पर कितना रोटेशन होगा? वापस ये अमीनो एसिड 1 है, यहां पर अमीनो एसिड सेकंड है, अमीनो एसिड थर्ड है, अमीनो एसिड 4 है, अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 1 की फाई वैल्यू कितनी होगी, साई वैल्यू कितनी होगी, अमीनो एसिड 2 की फाई वैल्यू साई वैल्यू कितनी होगी? तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स they depends upon a variable parameter and that is the R chain. So major deciding factor for psi and phi would be the R chain of an amino acid. Different amino acids, they have different kind of R chain and thus their dihedral angle. So phi or psi in dihedral angle, phi is a, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, phi is a bond angle between N and C alpha, while psi is a bond angle between C alpha and C. यहां पर इन दो डाईहेड्रल एंगल्स की क्या वैल्यूज होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. सो दैट वाज G.N. Ramachandran, that was predicted by and suggested by G.N. Ramachandran. G.N. Ramachandran ने कहा कि फाई की क्या वैल्यू होगी, साई की क्या वैल्यू होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन आर चेन
as well as he said that all those values could be permitted where there is no steric clash. So for amino acids we can say all those phi and psi values can be taken where there is no steric clash. That is what we mean by steric clash. From steric clash we mean that two atoms, they cannot be at the same place at a same time. एक वक्त पर एक ही जगह पर दो एटम नहीं हो सकते. Two atoms, they cannot come closer to a van der Waals contact distance because then there would be a repulsive forces. मैक्सिमम रोटेशन के बाद एटम्स वॉन डेर वाल्स कॉन्टैक्ट डिस्टेंस तक आ सकते हैं, उससे और नजदीक नहीं आ सकते. उससे नजदीक आने लगे, ओवरलैप होने लगे तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस होना शुरू होता है, स्टेरिक क्लैश होना शुरू होता है, अट्रैक्टिव की बजाय रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होते हैं और फिर हम कहते हैं दैट पर्टिकुलर फाई एंड साई वैल्यूज दे आर नॉट परमिसिव. सो फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड विच इज प्लेन फिक्स. इस पेप्टाइड बॉन्ड पर किसी तरह का रोटेशन पॉसिबल नहीं है. ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके ऊपर कोई रोटेशन पॉसिबल नहीं. ये सारे एटम्स एक साथ एक प्लेन में रोटेट करते हैं और ये सी अल्फा कार्बन है. लेट्स सी डायग्रामेटिकली हम इसको कह देते हैं कि दिस इज लेट्स से एन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ आर चेन लगी हुई है. सो एक तो रोटेशन यहां पर हो सकता है बिटवीन अ एन एंड सी अल्फा, और एन और सी अल्फा के बीच में जो भी रोटेशन होगा उसको साई से रिप्रेजेंट करेंगे. ऐसे ही दूसरा रोटेशन यहां पर हो सकता है बिटवीन अ सी अल्फा एंड सी. सी अल्फा और सी के बीच में जो कुछ भी रोटेशन हो रहा है उसे हम साई कहेंगे. यहां पर भी वापस देखो फाई के ऊपर रोटेशन की बात की गई है और रोटेशन के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर स्टेरिक क्लैश होते हैं. देखो आप यहां पर वापस इसमें रोटेशन के अंदर कि पॉसिबिलिटी तो क्या है किसी भी बॉन्ड के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो रोटेशन यहां से रोटेशन होकर ये प्लस 90 भी हो सकता है और प्लस 180 डिग्री भी हो सकता है. रोटेशन माइनस 180 भी माइनस 90 भी हो सकता है और माइनस 180 भी डिग्री. टोटल यानी 3 डिग्री का टर्न हो सकता है. पर इन 360 डिग्री के टर्न में आप यहां पर देख रहे हैं कंटिन्यूसली रिवोल्व कर रहा है, पर इस 3 डिग्री टर्न में कुछ जगहों पर अभी देखें स्टेरिक क्लैश होनी शुरू हो गई. तो यहां पर 5 में वापस और रोटेट होने पर यहां पर स्टेरिक क्लैश होने लग गई. तो जब ये स्टेरिक क्लैश होने लगे तब हम कहेंगे कि ये वाली वैल्यू, क्योंकि यहां पर सिर्फ 5 की बात करें, वह पर्टिकुलर 5 की वैल्यू परमिसिव नहीं है इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए. सो एट सम phi and psi values, the atoms like this C may come closer to a oxygen or hydrogen atom, may come closer even to the van der Waals contact distance. और जब कभी भी ऐसा होगा, देखें आप यहां पर जब कभी भी ऐसा हो रहा है तो we will see that that particular values they are not permissive. तो रोटेशन होने की वजह से हो सकता है कि दो एटम एक जगह एक साथ आने लगे और एक साथ पॉसिबल नहीं है. ऐसे हो सकते हैं पर एक साथ वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर उनमें रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होना शुरू हो. जीसी रामाचंद्रन ने प्यूरिफाइड अमीनो एसिड्स लिए और उन सब की क्या पॉसिबल 5 वैल्यूज हो सकती है, साई वैल्यूज हो सकती है, कब स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इन सब के बारे में रिसर्च की. और जो कुछ भी रिजल्ट्स थे कि कौन सी वैल्यूज परमिसिव नहीं है, कौन सी वैल्यूज परमिसिव है, उसको एक 2 डायमेंशनल प्लॉट के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश की. एंड दैट 2 डायमेंशनल प्लॉट इज रेफर्ड टू एज रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस पर प्लॉट की वैल्यू 5 की, which may range from 0 degree to plus 180 degree.
और इवन टू -180 डिग्री। वाई एक्सिस पर उन्होंने प्लॉट की साई की वैल्यू 0 से लेकर +180 डिग्री से लेकर माइनस, सो इधर की तरफ साई की वैल्यू पॉजिटिव वाली है, इधर की तरफ साई की वैल्यू नेगेटिव वाली है। इधर तरफ फाई की वैल्यू नेगेटिव है, इधर की तरफ फाई की वैल्यू पॉजिटिव। और जैसा हम बात कर चुके हैं, फाई इज अ बॉन्ड एंगल बिटवीन n and c alpha, and theoretically it may range from 0 to +180 degree, or even it may range from 0 to -180 degree। पूरा 360 डिग्री का टर्न हो सकता है। सिमिलरली फाई इज शोइंग अ रोटेशन बिटवीन सी अल्फा एंड सी। यहां पर भी वैल्यू है वह 0 डिग्री से लेकर +-180 डिग्री तक रेंज कर सकती है। तो इसको हम एक साथ ही लिख देते हैं, द वैल्यूज कुड रेंज फ्रॉम +0 टू +-180 डिग्री। पर उसमें से कुछ वैल्यूज हो सकता है परमिसिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस डायग्राम के अंदर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एलेनिन। ये एलेनिन को ड्रॉ कर रखा है। ये अल्फा कार्बन है और उसके साथ आर चेन में CH3 है। ये 3 एटम्स है, उनको ड्रॉ कर रखा है। और इधर की तरफ ये फाई एंगल की बात की गई है, फाई एंगल की बात की गई है। आप देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर फाई वैल्यूज पर यहां पर स्ट्रिक हिंड्रेंस हुआ उसकी आर चेन के साथ। ऑब्वियसली आर चेन जितनी छोटी होगी उतना स्ट्रिक हिंड्रेंस कम होगा। किसके साथ स्ट्रिक हिंड्रेंस हो रहा है? तो ये पूरा पूरा हम कह सकते हैं इधर की तरफ CH3 मींस आर चेन है। ये सिर्फ फाई की बात की, फाई की कुछ वैल्यूज अलाउड नहीं है, क्योंकि उस दौरान जब कभी भी रोटेशन हो रहा है तो सम एटम्स दे आर कमिंग नियर द आर चेन। इस तरीके से ये तो सिर्फ इधर रोटेशन होता है, ऐसे ही इधर की तरफ भी अगर रोटेशन होता तो देयर मे बी सम स्ट्रिक हिंड्रेंस विद द आर चेन। अभी सिर्फ इधर इधर की तरफ से रोटेशन की वजह से आर चेन के साथ स्ट्रिक हिंड्रेंस हो रहा है। और सिर्फ आर चेन भी नहीं, यहां कार्ब इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि NH ग्रुप है, उसके साथ भी स्ट्रिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। सो अगर एलेनिन की ही बात करें, व्हाट ही ऑब्जर्व दैट एलेनिन की ये साई फाई वैल्यू पॉसिबल है। ये साई फाई वैल्यू का मतलब ये -18 मान लें, -90 डिग्री, और इसकी वैल्यू भी -90 डिग्री। फाई की वैल्यू -90, साई की वैल्यू -90 पॉसिबल है। एलेनिन में ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है। एलेनिन यानी इस ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू लाई करती है, हम वापस कर दें, इस तरफ कोई वैल्यू लाई करती है तो फाई की वैल्यू है वह पॉजिटिव और साई की वैल्यू भी पॉजिटिव। अगर कोई पॉइंट इस पूरे ब्लॉक में कहीं लाई करता है तो, यानी इसको हम क्वाड्रेंट सेकंड में अगर कहीं लाई करता है तो, अगर कोई क्वाड्रेंट 1 के अंदर लाई करता है, इसका मतलब फाई की वैल्यू है वह तो नेगेटिव है और साई की वैल्यू है वह पॉजिटिव है। अगर कोई क्वाड्रेंट मान लें, इसको हम 3 नाम दे रहे हैं, क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है तो वहां पर फाई की वैल्यू है वह तो नेगेटिव है और साई की वैल्यू है वह भी नेगेटिव है। अगर कोई क्वाड्रेंट 4 में लेट से लाई कर रहा है तो इसका मतलब फाई की वैल्यू है वह तो पॉजिटिव है और साई की वैल्यू है वह नेगेटिव। ये चारों ही पॉसिबिलिटीज है। फाई की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, साई की वैल्यू भी प्लस माइनस हो सकती है या 0 हो सकती है। सो कुछ एलेनिन यहां पर भी देखने को मिला, कुछ एलेनिन की साई फाई वैल्यू, यानी उन्होंने क्या किया, एलेनिन लिया, एलेनिन C डबल बॉन्ड इस तरीके से ड्रॉ कर लें। ये अल्फा कार्बन है जिसके पास इस तरीके का है ये अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप को उन्होंने एसिटाइलेटेड कर दिया, एसिटाइल ग्रुप वहां पर ऐड कर दिया ताकि उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। और इधर की तरफ भी कोई अमाइड ग्रुप है वह ऐड कर दिया।
और अब वो क्या कर सकते हैं कि इन बॉन्ड्स पर रोटेशन को मॉनिटर कर सकते हैं, और इस पर जो भी रोटेशन होगा उसको फाई कहा जाएगा, यहां पर जो भी रोटेशन होगा उसको साई कहा जाएगा। टेक्निक क्या इस्तेमाल की पता करने के लिए, तो उन्होंने इस्तेमाल किया एक्सरे डिफ्रैक्शन। किसको? डाइहेड्रल एंगल को पता करने के लिए। उन्होंने देखा कि कोई एलेनिन इस वैल्यू को भी अडॉप्ट कर रहा है, एलेनिन इस वैल्यू को भी अडॉप्ट कर पा रहा है, एलेनिन इस वैल्यू को भी, एलेनिन इस वैल्यू को भी, एलेनिन इस वैल्यू, डिफरेंट एलेनिन, मतलब लेट्स से मिलियंस ऑफ एलेनिन अमीनो एसिड्स, दे आर, एंड एलेनिन भी हम कौन सी बात करें? एल एलेनिन की बात करें। दे आर अडॉप्टिंग डिफरेंट परमिसिव साई फाई वैल्यूज, इस तरीके से डिफरेंट साई फाई वैल्यूज को ऑप्ट इन कर रहा है। देखा कि एल एलेनिन यहां पर कहीं पर लाई नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट जो 3 क्वाड्रेंट्स हैं उसके अंदर लाई कर रहा है। 1 quadrant is not having any phi psi value, and that was the quadrant where the phi value is positive and psi value is negative. So what he said that for majority of L form of amino acid, the positive phi values and negative psi values, they are strictly most disallowed. जो कुछ भी उन्होंने कंक्लूजन था कि कौन सा अमीनो एसिड कितना एरिया को ऑक्युपाई कर सकता है, जो डिफरेंट डॉट्स थे, जैसे यहां पर डायग्राम में ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट किया गया, इसको हम इस तरीके से 4 पार्ट्स में वापस डिवाइड करते हैं। ग्लाइसिन के अंदर आप देख सकते हैं डॉट्स ऑलमोस्ट ऑल 4 क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ये डॉट्स यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ऑल लाइजिंग ऑलमोस्ट ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लाइसिन की आर चेन में सिर्फ हाइड्रोजन है, और आर चेन में अगर हाइड्रोजन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो सबसे मिनिमम होगा। सो दैट्स व्हाई ग्लाइसिन, वी हैव सेड दैट ग्लाइसिन occupies maximum area on Ramachandran plot. Even you can find the phi value positive and psi value negative, they are also possible for a glycine. Phi value पॉजिटिव एंड साई वैल्यू पॉजिटिव तो दिखाई दे रही है, फाई वैल्यू नेगेटिव, साई वैल्यू पॉजिटिव भी दिखाई दे रही है, फाई की वैल्यू नेगेटिव और साई की वैल्यू नेगेटिव, ये भी देखने को मिला। पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने, ग्लाइसिन की बजाय ज्यादातर बाकी अमीनो एसिड की बात करें, जो ब्लू सेक्शन में है वो हम एलेनिन की बात कर रहे हैं। तो एलेनिन आप देखेंगे कि जनरली इस पूरे रीजन के अंदर कहीं ना कहीं पर एलेनिन दिखाई दे रहा है, इस रीजन में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एलेनिन है, ऑल्दो दे आर हैवीली कंसिडर्ड एट दीज प्लेसेस। इस जगह पर एलेनिन सबसे ज्यादा है, यहां पर भी एलेनिन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। सम वैल्यूज दे ऑफ एलेनिन दे इवन रिसाइड्स इन दिस ब्लॉक, पर इस रीजन में कहीं पर भी एलेनिन की वैल्यूज अलाउड नहीं। For most of amino acids, this region is, for most of the L form of amino acids, this region is strictly disallowed. ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी ज्यादातर अमीनो एसिड्स के अंदर आप देखेंगे कि फाई की वैल्यू है वह तो नेगेटिव ही होती है, साई की वैल्यू पॉजिटिव भी देखने को मिल सकती है और साई की वैल्यू नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है। रामाचंद्रन ने ही बताया कि सबसे कम एरिया जो ऑक्युपाई करता है, आप देख सकते हैं मिनिमम एरिया विच इज बीइंग ऑक्युपाइड ऑन अ रामाचंद्रन प्लॉट, जिसमें ये वाली वैल्यू फाई वैल्यू तो लगभग फिक्स हो गई है, जो कुछ भी वेरिएशन है वो साई के अंदर की, साई की वैल्यू है प्लस भी हो सकती है और साई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मिनिमम एरिया ऑन Ramachandran plot is occupied by L-proline. We are talking about
अमंग स्ट्रैंड अमीनो एसिड्स, हम सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं, उसमें से अमंग स्ट्रैंड अमीनो एसिड्स, बिकॉज phi is fixed around -65 डिग्री। ऐसा क्यों, phi फिक्स क्यों हो गई? द रीजन इज दैट ड्यू टू एन इंट्रा चेन साइक्लिक स्ट्रक्चर। प्रोलीन का ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना एन सी एल्फा, ये इसकी खुद की आर चेन इसके साथ आकर जुड़ जाती है, ऐसे कुछ। तो अब इधर की तरफ कोई रोटेशन अलाउड नहीं है फाई के ऊपर, जो कुछ भी रोटेशन अलाउड है वह सिर्फ और सिर्फ कहां पर अलाउड रह गया, साई के ऊपर। मिनिमम रोटेशन is allowed toward the amino terminus side of proline. So variety of phi and psi values they can be adopted by different amino acids. Major criteria जो decide करेगा कि what phi and what psi value could be attained, that depends upon the R chain of an amino acid. This was work done by G.C. Ramachandran and forming a some kind of secondary structure. आपको एक अमीनो एसिड में टर्न ऐसा है तो फिर दूसरे अमीनो एसिड में भी ऐसा ही टर्न चाहिए, तीसरे में भी ऐसा ही चाहिए, और इस तरीके से अगर आपको किसी तरीके का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करना तो एक पर्टिकुलर तरीके की फिक्स्ड फाई साई वैल्यूज होनी चाहिए। फर्स्ट अमीनो एसिड के बाद सेकंड अमीनो एसिड, सेकंड के बाद थर्ड अमीनो एसिड, थर्ड के बाद फोर्थ अमीनो एसिड, अगर पर्टिकुलर तरीके की साई फाई वैल्यूज को एडॉप्ट कर पाता है देन ओनली देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो first working on a free amino acid, he started working on various peptides, different kind of secondary structures, and what he observed is that the amino acids they can form some well known secondary structures if they are able to form or adopt a particular dihedral phi psi value. For example, amino acid 1 can adopt -57, -47 value. It can be part of right-handed alpha helix. Amino acid second can also adopt these values, then this helix will continue. Third could also adopt this. Means every amino acid it has a range of phi psi values. पर in range of phi psi value में से क्या वह इस particular value को adopt कर पाता है या नहीं? If it is able to adopt this value, answer is yes. Alpha helical structure will continue. Then fourth amino acid, then fifth amino acid. जब कभी भी ऐसा कोई अमीनो एसिड आ जाए जो कि इस वैल्यू को अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो फिर आगे हेलिक्स कंटिन्यू नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। देन अगेन इफ अमीनो एसिड्स दे कम व्हिच कैन फॉर्म these or can adopt these values, alpha helical structure can be continued. Obviously अगर आपको हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो इधर की तरफ रोटेशन है तो अगले पोजीशन पर भी रोटेशन माइनस होना चाहिए, माइनस माइनस, देन ओनली यू आर एबल टू फॉर्म अ सम काइंड ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर माइनस माइनस से राइट हैंडेड स्ट्रक्चर बन रहा है, मींस इट इज फॉर्म यू आर फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर लाइक अ राइट हैंड कॉइल, दिस इज द राइट हैंड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ कॉइल। तो लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर रोटेशन आपको माइनस माइनस की बजाय प्लस प्लस तरीके का होना चाहिए। सो राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो phi and psi value should be -50, around -57 and -47. Left-handed alpha helical structure, generally there are some D amino acids which can form, because L amino acids they will favor a right-handed alpha helix. D form of amino acids they will have opposite phi psi value and thus they can form a left-handed alpha helix. Similarly, parallel beta sheets के अंदर the phi value is what he calculated is around -119 डिग्री and the psi value is, ये आपको zigzag स्ट्रक्चर बनाना तो ये वैल्यू माइनस है और दूसरी वैल्यू प्लस है। एंटी पैरेलल बीटा शीट बनाना है तो वैल्यू और ज्यादा माइनस है और ये वैल्यू और ज्यादा प्लस है। इन वैल्यूज को याद करके रखना है, नोट डाउन करना है आपको। 310 हेलिक्स के लिए phi की वैल्यू -49 है, psi की वैल्यू -26 है। पाई हेलिक्स के लिए phi की वैल्यू -55 -70 है। कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स के लिए phi की वैल्यू -55 और psi की वैल्यू +153 है। पॉलीपोलिन टाइप 1, पॉलीप्रोलिन टाइप 2 हेलिक्स के लिए वैल्यूज दे रखी है। बीटा टर्न टाइप 1, टाइप 2 और गामा टर्न सब के लिए phi psi वैल्यूज दे रखी है, इनको नोट डाउन करो, दीज आर इंपॉर्टेंट।
So this was the work done by GC Ramachandran कि इस तरीके की first amino acid, second amino acid, third amino acid, they can adopt a particular 5-psi value, then a fixed type of secondary structure can be formed. तो इन 5-psi वैल्यूज को आप एक बार नोट डाउन कर लें. सो नोट डाउन कर लिया आपने. चलो आगे बात करते हैं. सेम थिंग, जो 5-psi वैल्यूज है उनको हम रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं. सो इसको वापस में इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेता हूं. सो इस जगह पर कहीं पर आपके पास राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आ रहा है, तो यहां पर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. इस जगह पर यू आर गेटिंग एन एंटी पैरेलल बीटा शीट, यहां पर यू आर गेटिंग अ पैरेलल बीटा शीट, इस जगह पर यू आर गेटिंग अ 310 हेलिक्स, यहां पर कहीं पर आपको कोलाजन हेलिक्स मिलेगा जो लिखा हुआ नहीं है. Here you are getting a type 2 turn, some type 2 turn amino acid could be over here, and you can see that this region is sterically disallowed. This is sterically disallowed for L form of amino acids. This region is generally not allowed. The same thing, 5-psi values, they have been drawn on this diagram. We will come to this diagram later once again. Okay. So this was the work which was done by GC Ramachandran. GC Ramachandran ने इस वर्क को किया, जिसके बेसिस पर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के प्रोडक्शन की
बात करते हैं। सो अगेन मूविंग बैक टू दिस स्लाइड, जो अभी हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस की थी, कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is basically due to the local conformations of its backbone. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आर चेन का कोई रोल नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में ओनली रोटेशन अराउंड मेन चेन प्लेज रोल। It is basically local conformation of its backbone due to an phi and psi values, जिसको हम टॉर्शन एंगल्स कह सकते हैं, रोटेशनल एंगल कह सकते हैं और डाइहेड्रल एंगल कह सकते हैं। सी और एन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज एन और सी के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, एंड सी और सी के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल साई, जहां पर रोटेशन अलाउड। सो मेन चेन में यहां पर कितना रोटेशन होगा, यहां पर कितना रोटेशन होगा, वापस यहां फाई कितनी होगी, साई कितनी होगी, फाई कितना होगा, साई कितना होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुड बी फॉर्म्ड। एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि इंपॉर्टेंट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन्स में बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, these include right-handed alpha helix where phi value is -57, psi value is around -47. This is for, you have already noted down for the different kind of structure. Left-handed alpha helix, this is not naturally present. It is produced under experimental conditions. It is produced under experimental conditions by using D amino acids का इस्तेमाल करके। You can draw this diagram or I simplify a diagram for you. थोड़ा और सिंप्लीफाई मैं कर देता हूं जिसको आप ड्रॉ कर लें कि what is the location of different secondary structures. So somewhere here I'm naming it as 1. You will get, this is the phi values, this is the psi values. At position 1 you will get right-handed alpha helix. Another important structure is somewhere here 2 and here is 3. These are important, rest you can forget. 2, here you are going to form a parallel beta sheet. 3, you can form an and here that would be formation of anti-parallel beta sheets. One more structure what you can draw over here, that is 4. Here you will get a collagen helix. 5, somewhere here you will form a 3-10 helix, and one more if you can remember, somewhere here 6th would be pi helix, and only one structure is on this side, 7th I can put over here. This is
right-handed alpha, sorry, this is left-handed alpha helix. So in exam you can expect a direct question over here, इस तरीके से नंबर लिखे हुए हो सकते हैं और पूछा जा सकता है कि एट लोकेशन सेकंड विच काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर यू विल फॉर्म, एट लोकेशन 4 विच काइंड ऑफ, मींस एट डिफरेंट लोकेशंस कुड बी पॉइंटेड, एंड आपसे पूछा जाता है इस लोकेशन पर कैसा सेकंड, कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। तो 2 पर क्या बनेगा, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 पर दैट वुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल बीटा शीट्स। So now moving to the different kind of secondary structures. The first secondary structure which we are focusing is alpha helix, or more accurately right-handed alpha helix. Right-handed alpha helix. This is formed, as already mentioned, that when the consecutive amino acids phi value is having around minus 57 value 57 and psi values of consecutive amino acid is around minus 47, although plus minus 5 deviation is allowed. In alpha helical structure, a helical structure which was first time identified in a alpha keratin protein, and that helical structure which was identified by Pauling in a alpha keratin has been named as alpha helix. What he observed that in alpha helical structure, one helix has 3.6 amino acids. Another important thing is that helix height is 5.4 angstrom. Distance between two amino acids in this helical structure comes out to be 1.5 angstrom. When the two amino acids they are in extended state, the distance comes out to be around, if amino acids they are like this, amino acid 1 and 2, the distance which comes out in two amino acid is around 3.8 angstrom. But in alpha helix, the two amino acids they come very close, and the distance between two amino acid is around 1.5 angstrom. Further, so this helicity is due to phi and psi values, and due to this helicity what happens at variety of places, the C double bond O and NH group of main chain they come in front of each other. As you can see in a diagram, the NH and a C double bond O group they come in front of each other, and if NH and C double bond O group at multiple places you can find that NH group and C double bond O group they come in front of each other, and if it happens then further the structure could be stabilized by hydrogen bonding. You can see that there are hydrogen bonding at multiple places. So we can structure is stabilized by hydrogen bonding, and hydrogen bonding occurs between nth amino acid with N plus 4th. So you can say that amino acid
n, then there is amino acid n plus 1, then amino acid n plus 2, n plus 3, and then there would be an amino acid n plus 4. So you leave the 3 amino acid in between, बीच के 3 amino acid को छोड़ दें, वापस nth amino acid किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, n plus 4 के साथ. तो n plus 1 वाला किसके साथ करेगा, n plus 5 के साथ, एंड सो ऑन. इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. यानी एक अमीनो एसिड जिसका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो वापस n plus 1 के साथ नहीं, n plus 2 के साथ नहीं, n plus 3 के साथ नहीं, n plus 4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. तो n plus 2 वाला n plus 5 के साथ करेगा, n plus 3 वाला n plus 6 के साथ करेगा, n plus इस तरीके से कंटिन्यूसली every amino acid it carries out hydrogen bonding which is spaced by 3 amino acids. So I with I plus 4 या n with an n plus 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. nth अमीनो एसिड के अंदर जो एक्सेप्टर का काम करेगा that would be the role of an acceptor is played by main chain C double bond O group. So and donor of an n plus 4 would be played by main chain NH group. So they are involved in hydrogen bonding. So in hydrogen bonding what you find is main chain NH, main chain you can say amide, and carboxyl groups are involved. You can see that helix R chains, they do not have any role in hydrogen bonding, and these all R chain they are exposed आउटसाइड द हेलिक्स. इस तरीके से हेलिक्स से बाहर की तरफ आर चेन एक्सपोज है. आर चेन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं. मेन चेन है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है. तो रोटेशन इज एट फाई एंड साई वैल्यू, ओमेगा इज कांस्टेंट, एंड मेन चेन्स दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. द सेम थिंग could be represented like this. So accept the starting 3 amino acid from one terminus and last 3 amino acid from another terminus. Rest of all amino acid can maximally form 2 hydrogen bond because every amino acid has one NH group which can act as donor and C double bond O group which can act as a acceptor. So accept some amino acids which are at the ends of alpha helix which form only one hydrogen bond. Rest of all amino acids which are at the center, they will form a 2 hydrogen bond. It could be represented like this: N form a hydrogen bond with an N plus 1, N plus 1 will N plus 4, N plus 1 will form a hydrogen bond with N plus 5, N plus 2 will form a hydrogen bond with N plus 6, N plus 3 will form a hydrogen bond with N plus 7, N plus 4 will form a hydrogen bond with an N plus 8, N plus 5 will form a hydrogen bond with an N plus 9, N plus 6 will form a hydrogen bond with N plus 10, N plus 7 will form a hydrogen bond with N plus 11, and so on. N plus 8 will form a hydrogen bond with an N plus 12, and so on. So let's say there is a peptide of 15 amino acids forming alpha helix, जो alpha helix बना रही है, and the amino acids could be named as N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, and so on. N plus, the list will move to N plus 14. Okay, so N to N plus 14 are 15 amino acids. What you can find is that the amino acids N, N plus 1, N plus 2, and N plus 3, starting 4, they are forming only one hydrogen bond. So last 4, that is N plus 14, N plus 13, N plus 12, and N plus 11, they are
also forming only one hydrogen bond with n plus 7, n plus 8, n plus 9 and n plus 10. The amino acids which are in middle, like n plus 4 is here also, n plus 5 is also here, n plus 6 is also here, n plus 7 is also here, n plus 8 is also here, n plus 9 is also here, and n plus 10 is also here. So you can see that starting 4 amino acids, they form only one hydrogen bond. Last 4 amino acids, they form only one hydrogen bond, while the amino acid n plus 4, 5, 6, amino acid 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These amino acids, they are forming n plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These amino acids, they are forming a 2,2 hydrogen bond, because every amino acid has an NH group and C double bond O group. Hydrogen bonding is between nth amino acid with an n plus 4. What it means is that, let's say this is an amino acid n, this is an amino acid n plus 1, this is an amino acid n plus 2, this is an amino acid n plus 3, and this is an amino acid n plus 4. So the C double bond O group of nth amino acid is forming a hydrogen bond with an n plus 4, because these groups, they are in front of each other. These groups, donor acceptor group, they are in front of each other. Sometimes this alpha helix is also referred to as 3.613 helix. Alpha helix is also referred to as 3.613 helix, because one helix has 3.6 amino acids, and the atoms which are forming an hydrogen bonding, they are spaced by 13. So this atom and this atom is involved in hydrogen bonding. But अगर लीनियर स्ट्रक्चर में देखें तो ये एटम एक दूसरे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 atom की distance पर है. So in linear structure they are at the distance of 13 atoms. Then why they are able to form hydrogen bonding? Because they are in front of each other. And why they are in front of each other? Because the structure is helical. So that's why this is also referred to as, sometimes alpha helix is referred to as 3.613 helix. What would be the total number of hydrogen bonds? Total number of hydrogen bonds in alpha helix is number of amino acids minus 4. That would be your answer. That is, for example, there are 15 amino acids, number of hydrogen bond. Here you can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So if there are 15 amino acids, 15 amino acid minus 4, you will see that there are 11 hydrogen bonds. So what would be the total number of hydrogen bonds which are going to stabilize the alpha helix? That is simple to calculate. Total number of amino acid minus 4 कर लें, आपके पास total number of hydrogen bonds हैं वह निकल आएंगे. Then the alpha helix can be amphipathic or alpha helix could be hydrophobic. Most common observed alpha helix, which is having one phase is composed of, let's say, non-polar amino acid, and another phase of the helix is polar. Such an helix
would be referred to as amphipathic helix. That is, in amphipathic alpha helix, what you find is that there is a, you can say, there would be non-polar amino acid, then there would be polar, again there would be non-polar, again there would be a polar amino acid, again non-polar amino acids are there. Then again there somewhere you are getting a non-polar. So in this case, what you will find that occasionally after every 2 or 3, suppose this is a polar, you start this helix wheel from here. The first amino acid over here is, let's say, polar. The next is non-polar. Again there is a polar. Next amino acid is polar, and next amino acid, which is spaced by 3 or 4 amino acid, is again non-polar. So it will come on same phase. Again there is a polar amino acid. Next amino acid is lying somewhere here. This is non-polar, and so this one of the phase become non-polar while another phase become polar. Such an helix would be referred to as amphipathic alpha helix. तो यहाँ पर कुछ पोलर अमीनो एसिड भी है और नॉन पोलर अमीनो एसिड भी है. तो ऐसा हेलिक्स जिसमें पोलर अमीनो एसिड भी हो और नॉन पोलर अमीनो एसिड भी हो, ऐसे हेलिक्स को क्या कहा जाएगा? एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स. अगर सारे के सारे अमीनो एसिड, let's say if all amino acids would have been like this, alanine, leucine, phenylalanine, methionine, proline, alanine, valine, etc., then we will say that इससे जो बनने वाला हेलिक्स है, that would be hydrophobic helix. That would be hydrophobic helix. Most of the membrane protein, which is simply spanning the membrane, they are acting as a receptor or simply they are spanning the protein, they, which are like this in between the lipids, they are composed of hydrophobic alpha helix. But which are acting as a transporter, means from which some, which are spanning multiple times and which has to act as a transporter, means some polar ions has to be transported. Let's say कोई पोटेशियम आयन को इनको ट्रांसपोर्ट करना इधर से इधर, तो फिर हेलिक्स का एक फेस जो आयन के साथ इंटरेक्ट करता है उसका पोलार होना जरूरी है. तो हेलिक्स का एक फेस पोलार होना जरूरी है और दूसरा फेस जो कि मेम्ब्रेन लिपिड्स के कांटेक्ट में रहेगा वह नॉन पोलार होगा. ऐसे हेलिक्स को एम्फीपैथिक हेलिक्स कहा जाएगा. And various other proteins, when they fold, there may be some phase of alpha helix which is exposed toward the periphery, and there may be some phase of an alpha helix which is toward the core. Then the phase which is toward the core is composed of non-polar amino acids, while the phase which is exposed outside, this is composed of an polar amino acid. Such an helix would be referred to as an amphipathic alpha helix. So helix could be non-polar, even it could be a polar helix, but most commonly you find an amphipathic and hydrophobic alpha helix. There are some amino acids which generally destabilize the alpha helix, which can never be seen in an alpha helix, and that is, one such amino acid is proline. Proline and its modified version, that is referred to as hydroxyproline, they disrupt the alpha helical structure. They are often referred to as helix breaker. Further, you can find the proline on amino terminus. यहां पर फिर आपका proline हो सकता है, पर यहां पर हो सकता है, लेकिन इसके बीच में कहीं पर या सी टर्मिनस पर प्रोलीन है वह देखने को नहीं मिल सकता. एन टर्मिनस पर फिर हो सकता था, पर सी टर्मिनस साइड के अंदर प्रोलीन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि प्रोलीन की अमीनो टर्मिनल साइड पर प्रॉब्लम है. इधर की तरफ है तो हेलिक्स से आगे, हेलिक्स हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके अमीनो एंड पर अगर प्रॉब्लम भी है तो वह हेलिक्स का हिस्सा नहीं बन रहा. वेरियस अमीनो एसिड्स लाइक सीरीन, ग्लाइसिन एटसेट्रा, जनरली वह हेलिक्स को ज्यादा स्टेबलाइज नहीं करते. इवन इफ देर आर टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड like lysine, lysine,
both are positively charged, or there are two consecutive acidic amino acid, means negatively charged amino acids. These like aspartic acid both are negatively charged. There are consecutive positively charged amino acid or negatively charged amino acids, they will destabilize हेलिक्स, वह हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा या नेगेटिव चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा. एडजेसेंट अमीनो एसिड्स दे शुड नॉट बी ऑफ सेम चार्ज. इफ इट हैपेंस देन such helix will not be stable. Although their psi-phi values may say that वो अल्फा हेलिक्स बना सकता है, पर दो लगातार लाइसिन या लाइसिन के पास आर्जिनिन या लगातार दो आर्जिनिन कंटिन्यूस टू आर्जिनिन है, तो उस कंडीशन में फिर हेलिकल स्ट्रक्चर जनरली नहीं बन पाएगा. Now there are various techniques by which we can determine the secondary structure. We will study one technique that referred to as circular dichroism spectroscopy, which is routinely utilized. But we can also utilize an NMR spectroscopy, and in NMR spectroscopy what we can do is we can utilize we are treating a पेप्टाइड के सराउंडिंग के अंदर ड्यूटीरियम नॉर्मल वाटर की बजाय ड्यूटीरियम हाइड्रोजन वाला वाटर रखते हैं, और फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हाइड्रोजन यहां से हट जाए और इसकी जगह पर ड्यूटीरियम हाइड्रोजन आकर लग जाए, कितना रिप्लेसमेंट होगा. अगर अमाइड जितने भी नाइट्रोजन है अगर फ्री हो तो रिप्लेसमेंट ज्यादा होगा. पर और हम आगे जब एनएमआर पढ़ेंगे तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, इट गिव्स एनएमआर सिग्नल को जनरेट करता है, जबकि ड्यूटीरियम हाइड्रोजन होता तो नो एनएमआर सिग्नल, कोई एनएमआर सिग्नल प्रोड्यूस नहीं होंगे. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में ड्यूटीरियम सराउंडिंग में रखने के बाद भी एनएमआर सिग्नल में बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है. इसका मतलब नॉर्मल अमाइड हाइड्रोजन दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम हाइड्रोजन, and if normal amide hydrogen they are not replaced by an deuterium hydrogen, this suggests that most of the amide hydrogen they are involved in hydrogen bonding, and most of them they are involved in hydrogen bonding. It suggests that there is some kind of helical structure. So अगर अल्फा हेलिक्स या कोई दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर है तो D2A के साथ D2O के साथ रिप्लेसमेंट कराएं तो बहुत कम अमाइड हाइड्रोजन ही एक्सचेंज हो पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे अमाइड हाइड्रोजन हैं, these amide hydrogens they are involved in hydrogen bondings, all of them they are involved in hydrogen bonding, they are not free कि वह ड्यूटीरियम के साथ एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर पाए. अगर 50% के आसपास ड्यूटीरियम के साथ एक्सचेंज होता है तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज अ बीटा शीट स्ट्रक्चर, और उससे भी ज्यादा अगर ड्यूटीरियम के साथ एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है तो सजेस्ट दैट इट इज सम काइंड ऑफ रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर. देन मूविंग टू अनदर secondary structure, alpha helix is one of the most abundant secondary structure. Then this another secondary structure is 310 helix. Most often 310 helix is observed at the terminus of an alpha helix near, so this may be an alpha helix, and somewhere here you can find a 310 helix, and again you can find a alpha helix. So at the terminus of an alpha helix you can find, in between there may be some stretch where you can find a 310 helix. So there may be some region where you can find a 310
10. This is alpha helix on this side, and even you can find an alpha helix on this side. The important points about alpha helix is that it has a phi and psi value of -49 and -26, which you have already noted down. Like alpha helix, this is also right-handed. Hydrogen bonding is between the nth amino acid with a, this is n plus 1, this is n plus 2, this is n plus 3 R chain of n plus 3, this is an R chain of n plus 4, and so on. Or more accurately, from diagrammatic point of view, this is the peptide bond, so you will name it as an nth amino acid. This is another peptide bond, means this would be referred to as n plus 1 amino acid. This is another peptide bond, which would be named as n plus 2 amino acid. This is another peptide bond, which is referred to as n plus 3 amino acid. This is another peptide bond, which is referred to as n plus 4th amino acid, and this is n plus 5 amino acid, and so on. So, in case of 310 helix, nth amino acid, it is carrying out a hydrogen bonding with a n plus 3, 310 हेलिक्स, जबकि अल्फा हेलिक्स में n plus 4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही थी। ऐसे ही जब पाई हेलिक्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग n plus 5 के साथ, n plus 3 के साथ हो रही तो 310, n plus 4 के साथ हो रही तो अल्फा हेलिक्स, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग n plus 5 के साथ हो रही है तो उसे पाई हेलिक्स कहा जाएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बिटवीन nth amino acid with n plus 3. In alpha helix, the distance between two amino acid was 1.5 angstrom, while the distance between two amino acid in a right-handed 310 helix is 2 angstrom. So diameter is comparatively lesser. That's why the two amino acids, they would be at comparatively longer distance. On Ramachandran plot, ये चीज भी ध्यान में रखें कि अगर इस जगह पर here you are getting a right-handed alpha helix, so here you are going to get a 310 helix. यहां पर आप एक पॉइंट और भी नोट डाउन कर सकते हैं, that if let's say polyalanine, or more accurately polyl-alanine forms right-handed alpha helix, then D-alanine का पॉलीमर poly-D-alanine will form a left-handed alpha helical structure, because if a L-alanine can adopt a value of phi value -57, psi value of -47, then definitely the D form of amino acid is going to adopt a phi value of +57 and psi value of -47, because because the L form and D form, they are mirror images of each other. So what I want to say is that if some amino acid sequence composed of L amino acid is forming a right-handed structure, then same amino acid sequence if you are taken but they are in D form, तो right-handed की बजाय left-handed alpha helical structure बनाएंगे। सिर्फ उसके लिए ही नहीं, ये these concepts they apply for even 310 helix, they apply for our beta sheet and various other secondary structures, कि जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस phi और psi वैल्यू L फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स -49 -26 एडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो अगर हम D अमीनो एसिड लेंगे तो उसकी वैल्यू +49 और +26 होगी,
फिर राइट हैंडेड 310 हेलिक्स नहीं बनेगा, फिर लेफ्ट हैंडेड 310 हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा. देन another secondary structure which you can find somewhere in the middle of alpha helix. तो यहां पर हमने कहा 310 हेलिक्स भी हो सकता है, फिर अल्फा हेलिक्स भी आ गया, और फिर रेयरली बीच में पाई हेलिक्स आ गया, फिर वापस अल्फा हेलिक्स दिखाई दे रहा है. सो पाई हेलिक्स often also referred to as 4.416 हेलिक्स. बहुत रेयरली इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कंफर्मेशन है वह आसानी से अलाउड नहीं. सो बहुत स्मॉल सा सेगमेंट बिटवीन अल्फा हेलिक्स यू कैन फाइंड अ पाई हेलिक्स. In pi helix, the distance between two amino acids is 1.15 angstrom. That is, even the amino acid, they are at lesser distance as compared to the alpha helix. Here the hydrogen bonding is between n plus 5. So in 310 helix, as we already mentioned, hydrogen bonding is between n with an n plus 3. In alpha helix, hydrogen bonding is between an n with an n plus 4. And in pi helix, all three are right-handed structures stabilized by hydrogen bonding. Hydrogen bonding is between n plus 5. Pi helix is also referred to as 4.416 helix, while alpha helix is also referred to as 3.316 helix. Alpha helix is also referred to as 3.613 helix. 3.6, 310, 4.4, 16. Alternative name. Another structure which could be formed is 2.27 ribbon, or could also be referred to as 2.27 helix. As name suggests, here one helix has 2.2 amino acids, and the hydrogen bonded atoms, they are separated by or spanned by 7 atoms. So ये प्रोटीन्स में बहुत रेयरली ही या कभी देखने को नहीं मिला. यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग n+2 के साथ होती है. सो n+2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है n की, तो वह 2.27. n+3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दैट वुड बी 310 हेलिक्स. n+4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अल्फा हेलिक्स. n+5 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है n की, तो दैट वुड बी अ पाई हेलिक्स. सो जो 2.27 हेलिक्स है वह बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिसअलाउड है. वह कुछ इतना पतला स्ट्रक्चर होगा. उसके बाद ये 310 हेलिक्स का विड्थ कंपैरेटिवली फिर भी ज्यादा होगा. अल्फा हेलिक्स सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, और उससे भी कम देखने को मिलेगा पाई हेलिक्स. सो इस तरीके से हम कंपैरेटिवली बात कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं हाइट सबसे ज्यादा 2.27 की है, उसके बाद 310 हेलिक्स है, उसके बाद 3.613 हेलिक्स है, और सबसे लास्ट में हम इधर की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज 4.316. also referred to as pi helix. This is referred to as alpha helix. This is referred to 310. It is referred to as 2.27. These all are some kind of right-handed secondary structures. Another quite common secondary structure is referred to as beta sheet. Beta sheet structures, they are quite common structures in nature. Generally, the amino acids which are with a small R chain, the amino acids which are with a small R chain, they are preferred in beta sheets, so that stacking should be close.
क्योंकि यहाँ बीटा शीट में एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट आएगी, और वो पास पास में तब आ सकती है जब आर चेन की साइज स्मॉल हो. अमीनो एसिड्स लाइक glycine, alanine, serine, etc. they are preferred in a beta sheet structure. In beta sheet structure, the distance between two amino acids, the distance between two amino acids comes out to be 3.5 angstrom. So it is sheet like appearance. Amino acid 1 and amino acid 2, they come at a distance approximately around 3.5 angstrom. If they would have been extended, then under such condition the distance between these two amino acids would have been 3.8 angstrom. Now, depending upon what are the psi and phi value, these beta sheets could be further classified into two types. That is, these could be anti-parallel beta sheets or these could be parallel beta sheets. If the phi value is around minus 140 and plus 135, almost around that, then it is an anti-parallel beta sheet. And if the phi values they are around minus 120 and plus 115, then the structures which is being formed would be referred to as parallel beta sheets. So on a Ramachandran plot, here you will find a parallel beta sheet and here you will find a anti-parallel beta sheet. So here you can find nomenclature like this. Here you are getting a parallel beta sheets and here you are getting a anti-parallel beta sheets. This axis is for phi and this is axis for psi. This is the negative value, this is positive value, phi ki negative value, phi ki positive value. And we are assuming that we are talking about amino acids which are L amino acids. क्योंकि डी अमीनो एसिड्स हैं तो उनकी फाई की वैल्यू जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगी और जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएगी. फिर स्ट्रक्चर्स यहां पर ड्रॉ करेंगे अगर आप डी अमीनो एसिड्स को लें तो फिर जो बीटा शीट स्ट्रक्चर्स यहां पर बनेंगे एल अमीनो एसिड्स के यहां पर बनते हैं. जैसे हमने एल्फा हेलिक्स के लिए कहा था ना, राइट हैंड एल्फा हेलिक्स यहां पर तो लेफ्ट हैंड एल्फा हेलिक्स यहां पर बनेगा. सेम कंडीशन अप्लाई हियर आल्सो. So this is about the beta sheets, that they could be anti-parallel or beta sheets could be parallel. As the name suggests, in anti-parallel beta sheets, the two beta sheets, let's say this is an N terminus and this is C terminus of one polypeptide chain and this is N terminus and C terminus of another polypeptide chain. So two beta sheets, if they lie in opposite orientation like this, if they lie in an opposite orientation, then these are referred to as anti-parallel beta sheets. Again, the structure is stabilized by hydrogen bonding. Again, main chain NH and C double bond O are involved in hydrogen bonding. R chain का कोई रोल नहीं है. Main chain का NH and C double bond O group, they are involved in hydrogen bonding. Here the bond angle, like alpha helix, bond angle is around 180 degree. That is, donor acceptor, they lie in a same plane. So that's why anti-parallel beta sheets, they are more common and they are more stable. Anti-parallel beta sheets, they are more common and stable as hydrogen bond angle
is 180 degree. In alpha helix also, the hydrogen bond angle is 180 degree. So, two sheets which are having a positive and negative phi and psi values run in opposite direction, then these would be referred to as anti-parallel beta sheets. So, if phi value is, let's say, minus 140, then psi value must be positive 135. So, one value should be minus, another phi value should be minus, and psi value must be positive. Then only you are going to form a zigzag structure. If all values they would be negative or all values they would be positive, then you are going to form a helical structure. Then if the two sheets they both run in same direction, for example, this is in N2C terminus, this is also in same direction, you can draw it like this. पूरा diagram तो नहीं बनाना हमें. If two sheets they run in same orientation and then they carry out a hydrogen bonding, then the beta sheets they are referred to as parallel beta sheets. Parallel beta sheets they are rare and unstable. The reason is hydrogen bond angle, you can see that it is not 180 degree. The hydrogen bond angle is around 150 degree. So, hydrogen bond angle is around 150 degree, and that is why comparatively they are lesser stable. This is about the parallel beta sheets. Generally, small R chains they will allow a close to sheets to come close to each other, so that the hydrogen bonding is possible. अगर R chain small है तो sheets पास पास में आ पाएगी और पास पास में आ पाएगी तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी. So this is diagrammatic representation of plated appearance, where the two distance between, so this is one plate, distance between two amino acids is coming out to be a 3.5 and 3.5, that is will come out to be around 7 angstrom. That is, this is R chain and another R chain is on the same side after a periodicity of 7 angstrom. That is, R chain of an adjacent amino acids they lie on a opposite side. First amino acid R chain is on this side, the next amino acid R chain would be on this side, next R chain again would be on this side, and the distance between the two amino acids having R chain on same side is around 7 angstrom. So, due to a positive and negative psi phi values, it adopt a zigzag or plated structure. And here only since 50% of the amide hydrogen they are involved in hydrogen bonding. Various amide hydrogen they are free. So, various amide hydrogen, let's say this is free, these various hydrogen they are free. Here it is involved in hydrogen bonding, here it is involved in hydrogen bonding, this is involved in hydrogen bonding. So, 50% of them they are involved in hydrogen bonding and 50% are free. So, when you carry out an NMR spectroscopy in presence of D2O, you find that 50% of the D2O they are able to exchange amide hydrogen, which suggests that the structure is beta sheet. जो ये बताता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, बीटा शीट. So here you can write that R chain of two amino acids, two adjacent amino acids lies on opposite side.
only 50% amide nitrogen are involved in hydrogen bonding. R chain on same side are observed after periodicity of 7 angstrom. Hydrogen bonded amino acids need not to be adjacent, that is they can be at long distance. जैसे हेलिकल स्ट्रक्चर हम कहते हैं ना एन प्लस 3 के साथ एन प्लस 4 के साथ एन प्लस 5 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहां पर तो इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुड बी बिटवीन अ टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, या जिस अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है हो रही है दे मे बी सेपरेटेड बाय अ वेरी लॉन्गर डिस्टेंस। सो दिस इज अबाउट the beta sheet structure, which could be parallel or it could be anti-parallel. Another secondary structure which is most often present from where there is a U-turn in a protein is referred to as beta turn, beta band or a hairpin band. That is, let's say this is some sheet like structure, this is another sheet like structure, beta sheet structure, but there is a some turn from here, this is the turn. So structure which is being observed at this site, here the structure is referred to as beta turn or beta sheet. Then there could be various other structures, they could be there could be an alpha helix and various other structures could be there. In this beta turn or beta sheet, what you find is that nth amino acid is carrying out a hydrogen bonding with an N plus 3 amino acid. Nth amino acid is carrying out a hydrogen bonding with an N plus 3 amino acid. And N plus 1 and N plus 2 amino acids, they do not participate in hydrogen bonding. N plus 1 and N plus 2, they do not participate in hydrogen bonding. So you can say that N carry out a hydrogen bonding with N plus 3 and N plus 1 and N plus 2 do not participate in hydrogen bonding. And most often the amino acid which is present at N plus 1 position is proline. It is not always, but most often you will find that at N plus 1 you will find a proline, which is in its cis orientation allow a kink or bend in the structure, because proline is able to form a cis peptide bond. And most often at N plus 2 there is some amino acid with a small chain like glycine or serine or some other amino acids which help in taking this sharp turn. Such a structure is referred to as beta turn or beta band or hairpin band. Depending upon phi and psi values of N, so nth amino acid, then there is an N plus 1 amino acid, then there is an N plus 2 amino acid, and then there is a N plus 3 amino acid. Okay, and we are saying that N and N plus 3 they are involved in hydrogen bonding, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन N plus 1 और N plus 2 अमीनो एसिड की क्या फाई वैल्यू है, क्या साई वैल्यू, इसकी क्या N plus 1 की क्या फाई वैल्यू है, N plus 2 जो अमीनो एसिड है इसकी फाई और साई वैल्यू क्या है, इसके बेसिस पर जो रिवर्स टर्न है
they could be classified into different types. So depending upon, you can say nth अमीनो एसिड तो n+3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, पर बीच में जो दो अमीनो एसिड आ रहे हैं n+1 और n+2, इनकी फाई और साई वैल्यू क्या है, इसके बेसिस पर रिवर्स टर्न को फर्दर कई सारे टाइप में डिवाइड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 रिवर्स टर्न में, अगर आप टाइप 1 रिवर्स टर्न की बात करें, टाइप 1 रिवर्स टर्न के अंदर amino acid which is present at the second position has a phi value of -60 and psi value of -30, and जो अमीनो एसिड थर्ड पोजीशन पर है, ये अमीनो एसिड सेकंड पोजीशन की बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड जो थर्ड पोजीशन पर है उसकी phi वैल्यू -90 एंड psi वैल्यू 0, मींस ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव वैल्यूज, all negative values for psi and phi except this is 0. This is type 1. तो टाइप 2 के अंदर phi की वैल्यू, सेकेंड अमीनो एसिड की phi की वैल्यू -60 और psi की वैल्यू +120 है. दिस इज प्लस. अमीनो एसिड थर्ड पोजीशन पर है, उसकी phi की वैल्यू -90 और इसकी वैल्यू 0. देन दिस रेफर टू एज टाइप 2 रिवर्स टर्न. इस तरह से फर्दर क्लासिफाई किया सकता है. देयर कुड बी अ टाइप 1 प्राइम, जिसके अंदर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएगी, मींस phi की वैल्यू +60 हो जाए, psi की वैल्यू +30 हो जाए, थर्ड अमीनो एसिड की phi की वैल्यू +90 हो जाए, psi की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस स्ट्रक्चर को अब टाइप 1 प्राइम कहा जाएगा. सो टाइप 1 का रिवर्स मिरर इमेज 1 प्राइम है, ऐसे टाइप 2 की मिरर इमेज टाइप 2 डैश है, ऐसे टाइप 3 भी हो सकता है, टाइप 4 भी हो सकता है. सभी की साई फाई वैल्यूज हम याद नहीं करके रख सकते. देन अनदर secondary structure which is very rare, but it could, instead of a beta turn there could be a gamma turn. so सिर्फ याद रखने के हिसाब से बीटा टर्न के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग n की n+3 के साथ होती है, तो गामा टर्न के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग n की n+2 के साथ हो जाएगी, और इसी से डेल्टा टर्न भी हो सकता है जो काफी रेयर है, n की n+1 के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएगी. सो इन अ गामा टर्न I amino acid carry out a hydrogen bond with an I+2, yeah, you can say nth amino acid is carrying out a hydrogen bonding with n+2. So this is, you can say, nth amino acid. This is an n+1 amino acid which is again carrying out a hydrogen bond with an n+2 amino acid. So n is hydrogen bonding with n+2 and n+1 is not participating in hydrogen bond. So this amino acid which is in middle, it is not participating in hydrogen bonding. Or so we can say the atoms which are involved in hydrogen bonding, they are separated by 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So the atoms which are involved in hydrogen bonding, they are spaced by 7 atoms if it is a gamma turn. If the secondary structure of protein due to its certain psi-phi value do not fit into any of the known secondary structures, especially if protein contains various bulky liases like isoleucine, या पास में ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड पास में आ रहे हैं, उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे which is not fitting into some kind of secondary structure, for this we use a term that is referred to as random coil configuration. Okay, so if it is not fitting into any of the known secondary structure, तो उसके लिए we use a term random coil. So branch chain amino acid like isoleucine, conjugative
acidic amino acid or basic amino acid may not allow a formation of some secondary structure. Then it would be kept in the category of random coil. Some other lesser known structure is when you add various proline together experimentally, that is referred to as polyproline, and you put it in some kind of non-polar solvent. आप इसको non-polar solvent में रखते हैं, like long R chain alcohols. That could be octanol or comerol, decamerol, etc. उस condition में this polyproline, it forms a structure referred to as polyproline type 1, and polyproline type 1, which is rare in, which is not present in biological system because there is an aqueous environment. It is right-handed. Here the peptide bond between the different proline is in cis orientation. So important point about polyproline type 1 helix is, first, it is right-handed. Peptide bond, they are in cis orientation. In one helix there are 3.3 amino acids. The two amino acids, they are separated by 1.9 angstrom. Phi and psi values, they are plus 75 and plus, sorry, minus 75 and plus 60, and there is no intra-chain हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती. वैसे भी प्रोलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि उसके अमाइड हाइड्रोजन आर चेन के साथ बॉन्डिंग करता है, इसलिए अमाइड नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं, सो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. इसी तरीके से प्रोलीन 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 यानी पॉलीप्रोलीन जो स्ट्रक्चर है, उसको आप एक्वस एनवायरमेंट में रखें, वाटर में रखें, तो again it will form a helix. It, as shown in this diagram, it forms a helix, but this time it is a left-handed helix. It is referred to as polyproline type 2 helix. In polyproline type 2 helix, the peptide bond is in trans orientation. Proline can form cis peptide bond as well as trans peptide bond. In polyproline type 1 there was cis peptide bond. In polyproline type 2 there are trans peptide bonds. In polyproline type 2 helix there are 3 residues per turn. 2 amino acids, they are separated by the distance of 3.1 angstrom. The phi value is around minus 75 degree and psi value is plus 150 degree. Almost even if you take a polyglycine, the structure will resemble with polyproline type 2. Structure will be similar to polyproline type 2. पॉलीग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके का होगा. पॉलीप्रोलीन टाइप 2 बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को नहीं मिलता, बट कोलाजन हेलिक्स स्ट्रक्चर, कोलाजन हेलिक्स स्ट्रक्चर resembles polyproline type 2. तो कोलाजन हेलिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. कोलाजन हेलिक्स, कोलाजन प्रोटीन हैज अ यूनिक हेलिक्स नेम्ड एज कोलाजन हेलिक्स. कोलाजन हेलिक्स में, कोलाजन के स्ट्रक्चर में देखेंगे, देयर आर 3 अमीनो एसिड्स which are repeated in fashion, glycine XY, again you will get a glycine XY, again you will get a glycine XY. That is, every third amino acid would be glycine, and most often at X position you will get a proline, and on Y position, if there is a proline, this is hydroxylated, it is in form of hydroxyproline. So always on X position proline is not essential, but most often at X position you will get proline, and at Y position you can expect a hydroxyproline.
This glycine XY, every third amino acid is glycine. This adopt a left-handed helix, which is very similar to polyproline type 2. Polyproline type 2 से काफी हद तक resemble करता है. In this case, peptide bond, they are in trans. One helix, it has a 3.3 residues. The distance between two amino acids comes out to be 2.86 angstrom. The phi value is minus 51 and psi value is plus 150 degree. So note down these important point about this collagen helix. That collagen helix is left-hand helix, and again no intra-chain hydrogen bonding for stabilizing. न तो पॉलीप्रोलीन हेलिक्स में, न ही पॉलीग्लाइसिन हेलिक्स में, न ही कोलाजन हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती. At least helix is not stabilized by intra-chain hydrogen bonding. Then moving further, that these various secondary structures, they come in close proximity to each other and form structures referred to as super secondary structures, a building block for a higher level structures. So super secondary structures, they are combinations of more than one secondary structures. They do not have independent existence. That is, within a tertiary structure, if you are focusing on a small portion which is combination of more than one secondary structure, would be referred to as super secondary structure or motif. For example, there could be a beta sheet, then there could be alpha helix, and another there could be a beta sheet. The motif would be referred to as beta alpha beta motif. Similarly, there could be a beta sheet, again beta sheet, again beta sheet in anti-parallel fashion, forming a hairpin like structure, would be referred to as beta hairpin motif. There could be two alpha helix interacting with each other, would be referred to as alpha alpha motif. Or there could be another motif where there are again anti-parallel beta sheet. Let's say this is one beta sheet, then anti-parallel second beta sheet, then a third beta sheet, and then there is a fourth beta sheet, referred to as Greek key motif. So a small portion of a protein which is a combination of more than one secondary structure, which may be significant for some important functions, is referred to as motif. Various motifs, group of motifs like this may be beta sheet, turn, then beta sheet, and group of motifs. Various group of motifs combine in overlapping and non-overlapping ways to form a tertiary structure known as domain, and the structure of this domain is referred to as fold. The structure which is formed, the complete tertiary structure is domain, and in domain the arrangement of these super secondary structures which come in contact with each other is referred to as fold. So often fold and domain, they are
utilized as a synonym. The arrangement is referred to as fold, and this overall structure, 3D structure which is being formed, is referred to as domain. So domain, we can say that this is, let's say, a one domain with a linked with a flexible hinge with another domain. Here also there is a one domain, and then there is a with a flexible hinge region, there is another domain. So domain is a conserved part of a given protein which has its independent function. इस डोमेन का कुछ अलग काम हो सकता है इस डोमेन का, जैसे हम कई जगहों पे पढ़ेंगे कि दिस देयर मे बी अ डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है, and then there may be an activation domain which may interact with another enzyme, RNA polymerase, which may recruit RNA polymerase at this site. Different domain, they have different functions, and this arrangement of various motifs in a domain is referred to as fold. So we can say first, second, there is secondary structure. Combination of more than one secondary structure is referred to as motif. Various motifs, they arrange themselves into a higher level structure referred to as folds, and the overall structure, this 3D structure which is due to an arrangement of fold, is referred to as domain, and one protein may have one domain or more than one domain. Super secondary structures, that is motif, they do not have their independent functions. They have to be a part of domain, but domain has its independent function. Means अगर आप domain के हिस्से को कट कर कर अलग भी कर ले, इस domain के हिस्से को भी अलग कर ले, they will perform their independent function. कुछ एग्जाम्पल डोमेन्स के, जैसे कि अल्फा डोमेन्स, दे आर प्रेजेंट quite common in various proteins. Alpha domain, which is exclusively composed of alpha helix, present in myoglobins, various transmembrane proteins. Most of the transmembrane proteins, they have alpha domains. Beta domains, which are composed of only beta sheets, quite common is immunoglobulin fold. Immunoglobulin fold is composed of beta sheets. And various proteins, they have alpha helix as well as beta sheets. They are referred to as alpha beta domains. Now, secondary structures further fold over itself to form a tertiary structures. So this was a primary structure, and these are various secondary structure. Let's say these are various secondary structures, and various secondary structures, they fold over itself like this. Then the structure which would be obtained would be referred to as tertiary structure, and more than one tertiary structure, if they start interacting with each other, more than one secondary structures, they start interacting with each other, then the final structure which may come out would be referred to as quaternary structure. So protein which are composed of single subunit, final structure would be tertiary structure, but a protein which are composed of multiple subunit, the final structure which will come out would be a quaternary structure. So now whenever you are talking about tertiary and quaternary structure of protein, means you are talking about a protein folding, because here variety of secondary structures, they will come over each other. Now the tertiary structures, how they fold on basis of these proteins, could be classified into two categories. These proteins could be globular, or protein could be fibrillar. So taking one example of globular protein, myoglobin, which is present in, as we have already seen, around 16.7 kilodalton is molecular weight. It is present exclusively in muscles. It binds with, it is composed of single subunit. It is oxygen storage protein. It is basically a heme protein. So having a heme as a prosthetic group, and entirely it is composed of
राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और कोई इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है. सो यू कैन सी दैट there are variety of alpha helix number 1 2 3 4 5 6. These different alpha helix, they fold over each other to form a globular structure, and whenever there would be a folding like this, what you'll find is that at periphery you will have a polar amino acid, and at the core you will mainly have a non-polar amino acid. When it will helix, the protein tertiary structure is folded in a fashion that at periphery you will get a polar amino acids, and at the core you will find mainly non-polar amino acid. Myoglobin, since it is composed of single subunit, it can bind with one oxygen molecule. So, in a myoglobin, there is a covalently bound prosthetic group heme, and in heme at the center there is an iron, and this iron interact with the one oxygen molecule. Similarly, the final structure of myoglobin, if it is tertiary structure, then the final structure of hemoglobin would be quaternary structure. It is having a quaternary structure because it is composed of hemoglobin. It is composed of 2 alpha subunits and then there are 2 beta subunits. It is mainly present in RBC, can bind to 4 oxygen molecule. It is also a heme protein. ये भी एक heme protein है. So हर एक सबयूनिट के साथ, with each subunit there is a heme. Heme के सेंटर में होता है आयरन. आयरन एटलीस्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इट फॉर्म विथ अ नाइट्रोजन. 4 तो इन नाइट्रोजन के साथ. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ हिस्टिडीन के साथ बनाता है, ग्लोबिन के, and 1 coordinate bond it forms with a oxygen. So maximum 6 coordinate bonds they are formed by an iron. So 4 oxygen they can bind to a hemoglobin, and the secondary structure like myoglobin in hemoglobin is alpha helix. So these are some of the example of the one is example of tertiary, another structure is example of quaternary globular proteins. We can take a second category of protein referred to as fibrous protein. In fibrous protein, we can take a case of a keratin protein. This is the primary structure of keratin protein. The secondary structure of a protein is, so primary structure it is primary structure from a secondary, and secondary is mainly composed of right-handed alpha helix in a keratin, and these right-handed alpha helix they further coil into a structure referred to as coiled coil dimer. Higher level structure is referred to as coiled coil dimer. Here the direction of coil is coil dimer is left-handed. That is, इंडिविजुअल हेलिक्स इज राइट हैंडेड, पर ऐसे दो राइट हैंडेड हेलिक्स जब एक दूसरे के ऊपर कॉइल होकर डायमर फॉर्म करते हैं तो दे आर इन लेफ्ट हैंडेड फैशन. सो दिस इज एन टर्मिनस. इस डायग्राम के हिसाब से लेट्स से दिस इज द एन टर्मिनस ऑफ दीज कॉइल्ड कॉइल डायमर एंड दिस इज द सी टर्मिनस ऑफ दीज कॉइल्ड कॉइल डायमर. Such two coiled coil dimers they form a next structure referred to as tetramers, where these two coiled coil dimers they are in opposite orientation. This is N terminus and C terminus of one coiled coil dimer. This is C terminus and N terminus of another coiled dimer. So there is a formation of this tetrameric repeats.
एंड वेरियस दीज टेट्रामरिक रिपीट्स, इस तरीके की जो टेट्रामर रिपीट्स हैं ये बार बार अरेंज होकर, इस तरीके से टेट्रामेरिक रिपीट्स बार बार अरेंज होकर दे फॉर्म अ हायर लेवल स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज प्रोटोफिलामेंट, एंड वेरियस प्रोटोफिलामेंट्स दे align together to form a higher level structure 10 nm filament or simply referred to as keratin filament. So this is a keratin filament, this is a protofilament, this is a tetramer structure, and prior to tetramer structure there is a coiled dimer. So basic structure is right handed alpha helix. Such two alpha helix they coil around each other to form coiled dimer. Two coiled dimer they align in anti-parallel fashion to form a tetramer structure. Tetrameric structure they align in lengthwise to form a protofilament. Various protofilaments they align together to form a intermediate filament referred to as keratin filament. And further these structures could be stabilized by a disulfide bond. Here a one disulfide bond may be involved. Some of the disorder which could be there due to a mutation in keratin gene. So mutation in keratin gene can lead to genetic disorders, and two well-known genetic disorders include, one is epidermolysis bulbosa simplex and another is epidermolytic hyperkeratosis. These are basically due to a defect in a mutation in a keratin gene. Mainly the epithelial cells, hair, nail, skin, etc. they are quite abundant in keratin, and if there is a mutation these would be affected. Even if you have to change the pearl of your hairs, means जो hair है इसकी pearl को आपको change करना है, इसको straight करना है, coil करना है, तो उसके लिए भी आपको biochemical engineering करनी पड़ेगी. Keratin के structure में जो disulfide bond है उसको break करना पड़ेगा, कुछ रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट इस्तेमाल कर फिर शेप को रीमॉडल करना पड़ेगा, फिर वापस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि जो शेप है उसको चेंज कराया जा सके. अनदर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन व्हाट वी आर कंसीडरिंग टुडे इज अ कोलाजन प्रोटीन. कोलाजन प्रोटीन हम बात कर चुके हैं. एवरी थर्ड अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन. मोस्ट ऑफन ऑन एक्स पोजिशन देयर इज अ प्रोलीन, and on Y position if there is a proline it would be a hydroxyproline. So glycine XY, glycine XY, this is the sequence, this is the primary structure. Secondary structure in collagen, another important thing is that there are various post translational modification at variety of places. जो proline है उसको modify कर 3 या 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट किया जाता है, और स्पेशली एट फोर्थ पोजीशन, सॉरी एट वाई पोजीशन, ग्लाइसिन एक्स वाई पोजीशन पर अगर प्रोलीन हो तो इट इज मॉडिफाइड एंड कन्वर्टेड टू 3 और 4. या तो फोर्थ पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया जाता है या 3 पोजीशन पर OH ग्रुप लगा दिया जाता है. दिस रिएक्शन, that is proline is converted to an hydroxyproline. This reaction is being carried out by an enzyme referred to as प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज. और प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज को अपना काम करने के लिए कोफैक्टर की तरह एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट चाहिए. और 3 या 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन हुआ प्रोलीन पर तो इट विल प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी टू कोलाजन. सो अगर आयरन की कमी हो तो कोलाजन वीक होंगे. इस तरह से एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो तो भी कोलाजन वीक होंगे, और एस्कॉर्बिक एसिड की अगर कमी हो, कोलाजन वीक हो, मसल्स फ्रैगाइल हो, बोन्स फ्रैगाइल हो, द डिसऑर्डर कुड बी स्कर्वी. So scurvy is basically due to deficiency in vitamin C and major protein
जिसकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, दैट इज कोलाजन। क्योंकि कोलाजन में कई जगहों पर प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट होना जरूरी, दैट इज डन बाय प्रोलाइल हाइड्रोक्सी। सिमिलरली कई जगहों पर जो लाइसिन है दैट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ हाइड्रोक्सी लाइसिन, लाइसिन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी लाइसिन। सो these kind of post translational modification, that is proline into hydroxyproline and lysine into hydroxylysine, they are very important in providing a stability to the structure of collagen. So this is the primary structure composed of glycine XY. The secondary structure which is formed is referred to as collagen helix, and we have already studied about collagen helix that it is left handed. Phi value is around minus 50 and psi value is around plus 150 degree. Peptide bond, they are in trans orientation, no hydrogen bonding is there, and such collagen three collagen helix, three different polypeptide chain, they form a high level structure referred to as triple helix. Individual helix is left handed but and no hydrogen bonds. Individual helix is left handed and there are no hydrogen bonds, but triple helix has a hydrogen bond as well as it is right handed. So there is a formation of triple helical structure. Further, depending upon कि जो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन है वह किस तरीके की है, क्या for example if there are two alpha 1 and one is alpha 2, that is called as type 1 collagen, there are all three they are of alpha 1 type, then it is referred to as collagen type 2. सब है तो अल्फा ही पॉलीपेप्टाइड चेन, पर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का कौन सा वेरिएंट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस पर डिफरेंट कोलाजन टाइप में उसको डिवाइड किया जा सकता है. So we can note down depending on alpha polypeptide chain, depending on type of alpha polypeptide chain, collagen can be classified into different types like type 1, type 2, type 3 and so on. So depending on type of alpha polypeptide chain, collagen could be further classified in type 1 collagen, type 2 collagen, type 3 collagen and so on. This triple helix or also referred to as collagen, this is a triple helix. Further forms are aligned parallelly and there are covalent linkage which form a fibrils, and various fibrils they bundle together to form a collagen fibers. For this intra-chain hydrogen bonding, for this inter-chain hydrogen bonding, hydroxyproline is important, and here for this covalent linkage, hydroxylysine is important. There is a special type of covalent bond where important role is played by hydroxylysine. So, like keratin, collagen fibers they are also covalently cross-linked, and bonds they are derived from lysine from one side and histidine from another side. So, we will have a lysine from one side and histidine from another side, and on even from one more side you can get a lysine and histidine. The important enzyme which is involved in formation of this bond is lysyl oxidase, which is a copper containing enzyme जो कि लाइसिन को कन्वर्ट कर देता है एल लाइसिन के अंदर.
So this L-lysine is involved in mainly bonding. Inhibitor referred to as beta aminopropionitrile, that is BAPN. It inactivates lysyl oxidase and can cause a letharism where the collagen proteins, they are not working properly. Important thing, lysine from one side, histidine from another side, they are involved in bonding. The bond is referred to as histidino dihydroxy myrodesmosine, where the polypeptide chains from at least 4 sites, they can be involved in this kind of covalent linkages. Sometime older book also write this bond as lysine nor leucine bonding. The like keratin gene can lead, mutation in keratin gene can lead to an epidermobulbosa simplex. Similarly, the mutation in collagen gene can also lead to some genetic disorders. It can also lead to some kind of genetic disorders. The important are, note down, osteogenesis imperfecta, also referred to as brittle bone disease, and another is Ehlers-Danlos syndrome. Ehlers-Danlos syndrome. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एपिडर्मोलाइसिस बल्बोसा सिम्प्लेक्स किस जीन में म्यूटेशन की वजह से है और एलर-डानलोस सिंड्रोम किसकी वजह से. So these are two important disorders related to collagen. So this is the basics of hierarchical structures of protein. In next class, we are going to study little bit about the thermodynamics behind this protein folding. Okay, वापस लाइव क्लास को अटेंड करें और टाइमली चीजों को रिवाइज करते रहें. यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप चैट बॉक्स में जाएं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम को राइट करें और सेंड करें. सो अगेन हैप्पी लर्निंग. ज़्यादा स्ट्रेस न ले, टॉपिक बहुत सिंपल है. कई बार लग सकता है कि बहुत हायर लेवल है, पर कोई हायर लेवल नहीं है, बहुत बेसिक लेवल है. धीरे धीरे सब चीज़ें समझ में आएगी. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू. कल वापस मिलते हैं. बाय.